Hello, everyone. I hope all of you are having a great day. A very warm welcome to the PreMed.PK AKU guidance session 2023. I'm Sibgha Alam from FFC Newpur Mathelo, currently a first year medical student at the Aga Khan University, and I will be your host tonight. This journey you're all on is packed with uncertainty, frustration, and a lot of anxiety. From the ever changing government policies to the financial burden of academies and tuitions, at each step, a student with the mere dream of getting into a medical school faces novel problems and challenges, and many times has no one to guide him through that. Hasnan Mankani, a third year medical student at the Aga Khan Medical College, and Fahad Sheikh, a fourth year student at the Dow Medical College, while going through the same tiring journey of getting into their dream universities, realized they wanted to be the change in the system. And from there, they began the development of the idea of the now known PreMed.PK, a platform designed to revolutionize the educational landscape of Pakistan. This year, PreMed.PK helped pave the way for 35 out of the 100 top students who made into the badge of AKU 2027. The website had over 1,900,000 questions attempted in the 2022 cycle, and it crossed over 31,000 questions with over 40,000 signups. This year, we aim to bridge the gap from pre-med to medical for all of you. And so, we have with us my batchmates, Dawar Zahid, Balaj Ali, Oun Abbas, Varisha Madni, Talha Nadeem, and Zainab Heather. We will be covering each and every aspect of the AKU test, and at the end of the session, we will also be holding a question and answer session. I would like my batchmates from Dawar to start introducing themselves. All right, so Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammed Dawar Zahid, and I'm a first year medical student at Aga Khan University along with Sibgha and Talha and the rest of the speakers. So I basically belong from Lahore. My early education and also my O&A levels are from HSN College. And I recently joined med school, and to be very honest, just like Sibgha explained, the entire pre-med journey is something that's really difficult. So not to say कि हो नहीं सकती, like की जा सकती है, लेकिन the thing is that it is really difficult to go through this alone, which I did initially. And I'll go through that, when I get to, how my progress was. But that's essentially it with my introduction. And Sibka, you can introduce the next person, I guess. Balaj, you can go ahead. Yeah, so can you guys hear me? Yes, we can. Okay, so I'm Balaj Ali, Syed Balaj Ali Rizvi, that's my full name. I'm from Karachi. I did my A levels from Nixer College, and I used basically pre-med. The pre-med team basically helped me a lot in the whole process of applying into AKU, let it be the test preparation or the interview preparation. So yeah, I'm just carrying on the legacy of helping you guys and hoping to see you all as my juniors. We can move on to Varisha now. Hi everyone, I'm Varisha Madni. I'm a first year at AKU right now. I did my A levels from KGS, and last year at this time I was attending the pre-med session held by my seniors, and here I am right now. So it's a bit surreal and starting our universities right now, because you guys are going through this time right now we went through, and I know it's hard, but you will eventually get through with people around you. So yeah, don't worry, it's gonna be fine. Then we can move on to Oun. Hello everyone, I'm Syed Oun Abbas. I'm basically from Gujarat. I'm an FSC student, and I did FSC and matrix from Hamza Public School in College, Rawalpindi. Looking forward to guiding you and inshallah seeing you next year at this time in AKU. Zainab, next you can go next. Hello, Assalamu alaikum everyone. Firstly, I would like to welcome you all. Secondly, my name is Zainab Hedre, and I'm from Lahore. I did my O levels from convent, followed by my A levels from LGS 55 main. I'm really looking forward to helping you guys through this session, just like PreMed did with me last year with my application process. I hope this is helpful for you. Talha, you can go next. Hey everybody, I am Talha Nadeem.
from LGS. I am from Lahore. I did my O and A levels from LGS Defense. I will be guiding you about the procedure to get into Aga Khan. I am really thrilled to have all of you here, and let's go ahead. All right. So first of all, we'll be talking about the AKU test pattern and the logistics involved with it. Dawar would be going over it. So Dawar, you can take the mic. All right. So basically, I like to start with the online application. So a lot of people have this misconception that AKU essentially has an essay-based application, just like LUMS and other universities in Pakistan have, but it's not like that. So around March, exactly March 13th, the application has been open, and it's a really simple application. Honestly, you just have to like enter your basic details, वगैरह. And uske baad what happens is that the AKU test, shukar, it's one of the only tests in Pakistan जिसकी date आपको बहुत पहले पता चल जाती है. So we know the date right now, that's going to be August 6th. So essentially, after you've signed up and everything, what happens is कि अब actual test आएगा. So, the first thing that I would like to say to everyone over here is that do not worry about the test right now. One of the biggest mistakes that people make is that वो essentially मसला ये करते हैं कि एक second, Sibgha, am I audible properly? Yes, we can hear you. You can go ahead. ठीक है, perfect. So one of the biggest mistakes that people generally make when they're aiming for AKU is that they basically start focusing on the AKU test right now. So essentially around this time, what they should be doing is that they should be focusing on their A levels or on their FSC. Okay? So the reason for this is essentially the first reason is that AKU, at the end of the day, I would say they select 100 people out of 8,000 people that apply. So the problem with that is that at the end of the day, बात आपकी luck पर भी थोड़ा सा एक element आता है. You can be really amazing, but एक luck का element भी आता है. ठीक है. So the first thing that I would like to say is कि especially पंजाब के लिए, so I'm from Punjab, अगर आपके 3 stars let's say A levels में नहीं है, तो you're not going to get admission into a government college. ठीक है. तो अपने सारा do not focus only on AKU right now. That's the first thing. And the second thing that मुझे जो चीज़ ज़्यादा feel हुई थी, and this is something that I tell to everyone, is कि आप लोगों ने करना क्या कि just make sure that your A level concepts or if you're in FSC, कि जो आपके FSC की सारी चीजें just do them इतनी अच्छी तरह. Don't aim for 3 A's. Aga Khan does not have a really high A levels की requirement. But what you should do is that essentially just aim for 3 A stars. That's what I did. कि मैंने aim किया था 3 A stars के लिए, because when you're getting an A star, that means कि आपका let's just take chemistry for example. तो it means कि chemistry के topic के concepts आपके इतने crystal clear हैं that you're able to score better than top 5% of the people. So that is what I would suggest कि अभी के लिए, that's the first thing that I tell to every single junior that reaches out to me, कि अभी के लिए don't start buying federal की किताबें. और अगर ज़्यादा आप लोगों ने करना भी, I would suggest just focus a bit on the maths portion. ठीक है, maths and SR, you could perhaps do a few questions on the weekend. लेकिन honestly, you get done with your CIs around June if you're giving composite, and around May if you're giving अगर आप दे रहे हैं सिर्फ A2. So I would suggest that what you should do is and उसके बाद आपके पास around 2 months होते हैं, 2 to 3 months होते हैं. So I would suggest just focus on AKU का syllabus then, not right now. So as for the actual test pattern, so essentially we have 20 MCQs from bio, 20 from chemistry. You can see it in front of you. But the main thing that I would suggest is that a lot of people, what I've seen them do is that let's just take मैं अपना example देता हूँ. So I'm from an A level background. So what I did was that I knew कि इसमें FSC की चीजें भी आती हैं. So what I would do is that I just started doing FSC के MCQs. And for me, like when I started attempting actual mock papers on PreMed, मेरा score सही नहीं आया था. I believe the first paper that I attempted, I got hardly 40% in the science, science section, and that's really low. और ये मैंने तब किया था when I had properly prepared everything. The problem was कि just blindly जो AKU का paper pattern है ना, it's not based on A levels, it's not based on FSC, it's basically different. तो होता है क्या है कि A levels वाले बच्चे FSC पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, FSC वाले बच्चे A levels के क्वेश्चंस निकाल के करना शुरू कर देते हैं, and that never works. So please don't do that mistake. So what I would suggest is that there are certain resources, हम PreMed पे भी we're just working on helping you guys out with the AKU का test section even more. So hopefully in a few months हम अपनी website को भी इसी के साथ update कर देंगे, and we're just keeping that थोड़ा सा secret right now. We want to surprise you guys. तो इसके साथ जो next चीज आती है ना, Sibgha, can you go back? Okay, so the next thing that we basically have is कि science reasoning और maths reasoning को कैसे करना है. So this is something that I generally observed कि OA levels वाले बच्चों के लिए science reasoning and maths reasoning is much easier compared to the biochem physics वाला. Essentially paper के अंदर होता क्या है
कि you have two main sections. ये तो हम लोगों ने सारे सब sections लिखे हुए ना. You have two main sections. And the thing with those two main sections is एक हमारे पास होता है science section और एक होता है हमारे पास science reasoning and maths reasoning, which is called SR. अब इसमें होता है क्या कि you have to pass both sections. So something that really happens, this happened with a lot of seniors of mine, and मेरे कुछ batchmates के साथ भी unfortunately ये चीज़ हुई थी कि लोग एक portion pass कर जाते हैं. So A-level kids, they usually pass the science reasoning and maths reasoning portion, but they fail the biochemistry physics वाला portion. ठीक है. And on the other hand, FSC वाले बच्चे जो होते हैं वो science reasoning वाले portion को pass कर जाते हैं. नहीं, sorry, they pass the general sciences portion and they fail the science reasoning portion. ठीक है. लेकिन in order for you to pass the टेस्ट आपने करना क्या होता है, दोनों पोर्शंस को पास करना होता है. ठीक है. सो उसके लिए यू कांट आपने सारी चीजों पे इक्वली फोकस करना होता है. कुछ बच्चे ये टेस्ट में करते हैं, वन ऑफ माय बैचमेट्स डिड दिस कि हिज जनरल साइंसेस पोर्शन वाज रियली गुड. तो उसने कहा कि व्हाट आई विल डू इज कि आई विल जस्ट डू द साइंस रीजनिंग एंड मैथ्स रीजनिंग फर्स्ट एंड देन आई विल डू बायोकेम फिजिक्स वाला. एंड व्हाट हैपेंड वाज कि जब उसका साइंस रीजनिंग वाला पोर्शन खत्म हुआ, हिज माइंड वाज जस्ट टायर्ड, वो थक गया था लिटरली. ही वाज लाइक मेरे से बाकी किया ही नहीं गया, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था. And he ended up passing the science reasoning portion with, I believe, a 92%, which is really high. और जो जो general sciences वाला था, he failed that. So इसलिए the thing is that coming to the next point that I want to tell you guys is कि Aga Khan का syllabus जो है, it's available on the website. ठीक है. One of my colleagues will tell you guys more about that in a bit. लेकिन Aga Khan का syllabus is essentially available on the website और बहुत ज़्यादा syllabus है. You have stuff from A levels, you have stuff from FSC, and you have stuff from SAT1. कुछ SAT1 के topics हैं which aren't available in SAT2, sorry. SAT2 के कुछ topics हैं which aren't available in A levels and FSC, वो भी कुछ मौजूद है. तो होता क्या है कि kids what they do is कि वो start करते हैं तैयारी करना. ठीक है. And the problem that essentially happens is कि after a certain point ना उनसे पूरा वो they just have hardly did 10% of the syllabus, and I'm not lying. Yeah, the entire technique is आपका mindset in the test. ठीक है. You need to have a test strategy. ठीक है. टेस्ट को attempt करने का एक proper तरीका होता है. ठीक है. तो और वो तरीका you need to have a in the same way how, let's say, I'll just give you an example of MD-CAT. ठीक है. तो मैंने जब MD-CAT दिया था, I did it in 20 minutes. ठीक है. और मतलब it was just okay. ठीक है. लेकिन मेरा दिमाग उस तरह से उसमें नहीं यूज हुआ था. इट वाज रियली सिंपल कि बस मैंने फैक्ट्स रिकॉल करने थे. आगा खान का एग्जाम, ये जो आप देख रहे हो ना कि दो सेक्शंस हैं, देयर इज अ जनरल साइंस सेक्शन एंड देयर इज अ रीजनिंग सेक्शन. बोथ ऑफ दीस सेक्शंस यूज डिफरेंट पोर्शंस ऑफ योर ब्रेन. ठीक है. तो होता क्या, बच्चे, आई जस्ट गिव यू अ मिस्टेक दैट पीपल मेक. ठीक है. कि बच्चे बेसिकली क्या करते हैं कि जनरल साइंस वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. उनसे थोड़े से सवाल होते हैं. ठीक है. लाइक लेट्स से कि वो अराउंड 25 26 क्वेश्चंस पे आते हैं एंड उनका दिमाग बंद हो जाते हैं जनरल साइंस पोर्शन. ठीक है. वो वाला पोर्शन ऑफ द ब्रेन इट स्टॉप्स वर्किंग. तो अब बाकी सवाल पड़े होते हैं, उन्होंने चीज सुनी होती है कि एक पोर्शन को कंप्लीट करके दूसरे पोर्शन पे जाना होता है. तो व्हाट दे डू इज कि वो तुक्के मारना शुरू कर देते हैं. ठीक है. दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल कि एक पॉइंट के बाद ना योर ब्रेन जस्ट गेट्स टायर्ड. ठीक है. एंड देन जब वो तुक्के मार के जनरल साइंस को गंदा सा करके नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं, साइंस रीजनिंग पे एंड मैथ्स रीजनिंग पे, तो व्हाट हैपेंस इज कि साइंस रीजनिंग के लेट्स से 15 एमसीक्यूज करेंगे, देन देयर माइंड अगेन गेट्स टायर्ड. ठीक है. तो इसके लिए देयर इज अ स्ट्रेटजी दैट आई यूज एंड लॉट ऑफ माय बैचमेट्स यूज, व्हिच इज बेसिकली दिस थिंग कॉल्ड व्हाट it's basically you attempt the question in a you attempt the question paper in a loop. ठीक है. कि आप multiple loops लगाते हो. So for that we'll basically be uploading a detailed video on our YouTube channel, जिसमें हम एक एक छोटी छोटी चीज आप लोगों को खोल के समझाएंगे कि proper एक टेक्निक होनी चाहिए. Because at the end of the day what happens with a lot of people is कि उनकी तैयारी भी अच्छी होती है. ठीक है. So I had this batchmate जिसने मेरे से ज्यादा सिलेबस किया हुआ था. ठीक है. लेकिन because he had invested that much time कि उसने इतनी मेहनत की हुई थी, he kind of got intimidated on the actual test paper. ठीक है. कि मैंने तो इतना पढ़ा है, मेरी मेहनत जाया हो जाएगी. ठीक है. and that intimidation basically led him to freaking out in the paper, because paper में time का बहुत मसला होता है. It's a 2-hour paper and every single second counts. ठीक है. 2 घंटे के लिए you will be utilizing your entire brain. ठीक है. so it's really difficult. The test itself मजे का है. ठीक है. like I heard this a lot from my seniors, AKU का टेस्ट बहुत मजे का है. और मुझे बात काफी stupid लगती थी कि टेस्ट मजे का कैसे हो सकता है. लेकिन आफ्टर द टेस्ट वाज डन विद, आई वाज लाइक ये टेस्ट एक्चुअली काफी एंगेजिंग था, कि मुझे मजा आ रहा था बकायदा ये टेस्ट सॉल्व करने में. तो होपफुली दैट विल बी द केस विद अ लॉट ऑफ यू. लेकिन एट द सेम टाइम
at the end I would just like to say दो तीन चीजें. एक तो पहली चीज ये कि अभी just focus on your A levels or your इंटर के एग्जाम्स, ठीक है, बातें भूल जाओगे आप लोग, ठीक है. अच्छा, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो बातें आप लोग भूल जाओगे. एंड द सेकेंड थिंग इज कि अच्छा ए लेवल्स वाले पे फोकस करना. सेकेंड थिंग इज यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी टू हैंडल द टेस्ट पैटर्न. एंड द थर्ड थिंग इज दैट essentially जो syllabus है वो सारा नहीं होने वाला आपसे, ठीक है. You can do it if you're someone as special as Sibgha, ठीक है, but for most of us नहीं होता syllabus, and that's nothing. Like I would suggest once you're done with your exams, do start going over it, ठीक है. लेकिन at the same time I would suggest कि it's something जो कि like don't focus on your syllabus completely. कि अच्छा जी syllabus नहीं हुआ, मेरे से test नहीं pass होने वाला. I'll just end this with one small thing, ठीक है. वो ये है, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू गाइस वन मोर थिंग. सो बेसिकली आगा खान का जो पेपर होता है ना, इट हैज अ थ्रेशहोल्ड, ठीक है. और इन माय टाइम आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, आई थिंक वन ऑफ माय कॉलीग्स कैन टेल यू क्या एग्जैक्ट नंबर्स थे. आई बिलीव इट वाज 63% इफ आई एम 62%, ठीक है. तो यू हैड टू स्कोर 62%. सो एसेंशियली व्हाट दैट मींस इज कि 8000 बच्चों में से टॉप 300 की जो स्कोर थे ना, दे वर अबव 62%. तो एसेंशियली आपने करना क्या होता है कि आपने ना, यू जस्ट हैव टू फॉल इन दैट ब्रैकेट के टॉप 300 में मैंने आना है, टॉप 200 टॉप 300 में मैंने आना है. उसका ये नहीं होता कि पहले से आपको पता है कि मैंने टॉप 75% में, कि मैंने 75% में स्कोर करना है. इट्स नॉट लाइक दैट. तो बेसिकली वंस द टेस्ट इज डन, वंस द रिजल्ट्स आर आउट, तो तब वो थ्रेशहोल्ड का बताते हैं कि ये थ्रेशहोल्ड बना है. सो आई वुड जस्ट लाइक टू एंड दिस विद वन थिंग. आई नो कि आगा खान का सिलेबस काफी अभी फॉर द फ्यू ऑफ यू जिन्होंने देखना शुरू कर दिया है, ठीक है. आई नो इट्स रियली इंटिमिडेटिंग, इट्स अ लॉट, ठीक है, मतलब इट इज अ लॉट. मैंने अराउंड दिस टाइम, बट लाइक एक्चुअली 2 months ago, लाइक लास्ट ईयर अराउंड जनवरी 8th एक्चुअली मेरी बर्थडे का दिन था, जब बर्थडे से 2 दिन पहले की बात है. एंड आई वाज सो वरीड दैट आई वाज लाइक आई हैव टू गो एंड आई हैव टू लाइक गेट आगा खान की सारी किताबें एंड द सिलेबस. एंड आई जस्ट सॉ द सिलेबस एंड आई वाज लाइक ये मेरे से नहीं होने वाला, ठीक है. ऑल्सो बर्थडे लास्ट ईयर थी. अच्छा, तो मेरे से ये नहीं होने वाला. एंड अ वीक बिफोर द टेस्ट मेरा हार्डली कोई 10-15% सिलेबस हुआ था. एंड आई वाज लाइक कि मैंने टेस्ट नहीं देना. एंड आई वाजंट गोइंग टू गिव द टेस्ट. आई जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, 2 दिन पहले तक मैं टेस्ट नहीं दे रहा था. लेकिन देन लाइक माय पेरेंट्स वर लाइक दे दो, कुछ नहीं होता, अगर होना होगा हो जाएगा, ठीक है. अल्लाह की उसमें अल्लाह पे भरोसा रखो. सो दैट इज व्हाट आई वुड जस्ट टेल यू गाइस कि जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट अल्लाह's प्लान, ठीक है. एंड आई विल बी कमिंग बैक थोड़ी देर बाद टू टॉक अबाउट माय जर्नी एज वेल, ठीक है. सो Sibgha, you can take the floor. So yes, Dawar very detailed talked about the test pattern and the timeline and how you should go about it. Next, Balaj is going to talk about the resources and what we recommend, what we used. So yes. Okay guys, so Dawar ने सारी चीज़ तसल्ली दिलाने वाली बात कर ली कि सिलेबस किसी का पूरा नहीं होता. That is correct. But that does not give you guys a pass कि तुम लोग सब exactly 10% syllabus या exactly 20% syllabus करके चले जाओ. Your main intent should be to cover as much of the syllabus as possible along with the practice, ठीक है. Now let's talk about the resources कि क्या resources हमें use करने हैं. Can you guys hear me? Because some people are saying in the chat they are unable to hear. Just let me know if you guys can hear me. Audible, perfect. Okay, so let's divide the resources into 3 sections. एक चीज होती है primary resources, एक होती है secondary resources, and then there are resources that you use for practicing whatever the information that you've learned. अच्छा, practice को हम बाद में देखते हैं. पहले हम primary resources की बात करते हैं. Because first of all you have to learn the information. तुम लोग को याद करनी है चीजें, ठीक है, and then you apply that, then you practice that. तो याद करने के लिए the main core syllabus जो cover करना है तुम लोगों को, which is humongous, तुम लोगों को cover करना है using your Punjab and federal board books. Now the rule of thumb is कि biology के लिए, like I'm pretty sure everyone would agree in the meeting, my colleagues would be that bio के लिए you're supposed to use the Punjab book, ठीक है. Chemistry will be covered partly from the federal board book, primarily from the federal book, and then the remaining portion, जैसे कि कुछ चीजें पंजाब की बुक में नहीं है, वो तुम फेडरल से कवर करोगे केमिस्ट्री में, एंड देन द रिमेनिंग स्टफ यू गोना कवर फ्रॉम पंजाब, ठीक है. सो दोनों से सप्लीमेंट करके यू हैव टू स्टडी. एंड फिजिक्स इज मेनली पंजाब बुक, ठीक है. सो आई एम गोना गो ओवर इट वंस अगेन. बायो के लिए यू आर सपोज्ड टू यूज योर पंजाब बुक, केमिस्ट्री के लिए फेडरल एंड देन पंजाब, बोथ ऑफ देम, एंड देन फिजिक्स के लिए पंजाब. दीज आर योर प्राइमरी रिसोर्सेज जिनसे तुम्हें
AKU के सिलेबस को कवर करना है. Now let me go over briefly कि AKU का सिलेबस कवर किस तरह से करना है. Now first of all I want you guys कि तुम AKU की वेबसाइट पे जाओ, वहां से उनका सिलेबस डाउनलोड करो, ठीक है. Now if you have a printer at home then print the whole syllabus या जाके उसको प्रिंट करवा लो. I would highly recommend कि AKU का जो पूरा सिलेबस है उसको प्रिंट कर लो, ठीक है. AKU का सिलेबस बहुत अच्छे से डिजाइन हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें चैप्टर्स हैं, ठीक है. सो एक चैप्टर दूसरा, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स है, ठीक है. देन यू हैव रेस्पिरेशन. मैं सीक्वेंस से नहीं बता रहा, मैं चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल होमियोस्टेसिस, एंजाइम्स, इस तरह से चैप्टर्स हैं. देन उन चैप्टर्स के सब टॉपिक्स हैं, ठीक है. एंड देन हर सब टॉपिक के आगे उसके लर्निंग आउटकम्स लिखे हैं. अगर कोई यहाँ ए लेवल्स, आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग ए लेवल से होंगे, तो इट इज जस्ट डिजाइन द वे ए लेवल सिलेबस इज डिजाइन, ठीक है. टॉपिक लिखा हुआ है, उसके सब टॉपिक्स हैं और हर सब टॉपिक के आगे लर्निंग आउटकम्स लिखेंगे कि तुम्हें एग्जैक्टली ये चीज पता होनी चाहिए. सो यू डाउनलोड द सिलेबस, यू प्रिंट इट आउट, ठीक है. एंड देन फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट विद द चैप्टर जो तुम्हें सबसे ज्यादा आसान लगता है या पढ़ते हुए मजा आता है, इससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है. सो दिस इज ऑल द प्रैक्टिकल स्टफ दैट आई एम टेलिंग यू because I have been through this whole journey myself and I know what helps and I know what did not help, ठीक है. तो just download the syllabus, print it out. और अगर कुछ लोग fancy से लोग हैं, उनके पास iPad होगा with the cool iPad like pencil वगैरह all that stuff, so you can use that as well. But okay, with syllabus, oh, go to the AKU की website. We're gonna by the way share a drive link as well. उसमें भी AKU का syllabus होगा, ठीक है. Download the syllabus, print it out. Then for example you start with your favorite chapter. Let's say बायोकेमिस्ट्री, जो कि किसी का भी नहीं होगा, मेरा है, but not judging anyone. रेस्पिरेशन, ठीक है, तुमने इसे स्टार्ट किया. फर्स्ट सब टॉपिक, उसका पहला लर्निंग आउटकम, कवर दैट फ्रॉम द पंजाब बुक बायोलॉजी के लिए. उसके ऊपर पेंसिल से एक क्रॉस लगा दो, लिटरली जस्ट क्रॉस दैट आउट, ठीक है. इसके दो फायदे. एक, इन द एंड लाइक एग्जाम से पहले जब तुम पूरा सिलेबस दोबारा से देखोगे या देखोगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में मैंने ये सब कवर किया हुआ है, ठीक है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. वरना अगर कुछ लोग मार्क नहीं करते ना एग्जाम से पहले, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ या मैंने सब कुछ किया हुआ है. हैविंग एन ऑब्जेक्टिव मार्कर ऑन योर सिलेबस, तुम लोगों को ये समझ आ जाएगा कि ओके ये चैप्टर मैंने कवर किया हुआ है, ये चैप्टर कवर नहीं किया हुआ है. एंड आई वुड सपोर्ट दावर अगेन कि बिल्कुल भी सिलेबस पूरा कवर नहीं होता एक्सेप्ट फॉर पीपल यू नो लाइक सिबगा जो 3 दफा कर ले. बट या सो ठीक है, उसको तुम लोगों ने क्रॉस आउट कर लिया. इसी तरह से पहले लर्निंग आउटकम कवर किया, उस पर क्रॉस लगाओ, दूसरे वाले पे आओ, क्रॉस दैट आउट, तीसरे पे आओ, क्रॉस दैट आउट. इस तरह से एक सब टॉपिक हो गया, ये पूरा सब टॉपिक कवर हो गया. देन कम टू दैट सेकंड सब टॉपिक, कवर ईच ऑफ द लर्निंग आउटकम्स, क्रॉस देम आउट. लाइक इस तरह से तुम लोगों का एक पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है. इस चैप्टर को तुमने साइड पे कर दिया, तो ये चैप्टर अब चला गया तुम्हारी प्रैक्टिस वाली कैटेगरी में, ठीक है. तुम लोगों ने इसको कवर कर लिया, मटेरियल याद कर लिया, अब ये प्रैक्टिस वाले सेक्शन में चला गया. इसको तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे. प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मैंने कवर दैट इन अ व्हाइल. तो इस तरह से तुम लोगों को अपना साइंसेज वाला सेक्शन यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कवर करना है, ठीक है. अच्छा, क्रॉस आउट करने का पहला रीजन मैंने बताया कि तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि तुम लोगों ने क्या कवर किया हुआ है. नाउ बी, इससे तुम लोगों को मोटिवेशन मिलेगी. बिकॉज एग्जाम से पहले जब तुम लोग देखोगे ना पूरा सिलेबस, लाइक जब तुम लोग गो थ्रू करोगे कि ओके मैंने क्या क्या कवर कर लिया है, तो डोपामिन, यस, सो तुम लोगों को समझ आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मुझे आता है, ठीक है. आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ एंड मैं पेपर जाके दे सकता हूँ. आई नो पीपल जो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, दे मेस अप द एग्जाम और वो वापस उदास होकर आ रहे होते हैं. आई नो पीपल जो कि अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उस वजह से भी उनका पेपर अच्छा नहीं होता. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट बट यू डोंट नीड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है. नाउ इससे ये फायदा होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि तुम लोगों को रीजनिंग कैसे कवर करनी है. बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोगों ने जो फॉर्म भरा था उसमें आए थे कि यार मैथ रीजनिंग और साइंस रीजनिंग कवर कैसे करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात अपने जहन से निकाल दो कि मैथ रीजनिंग मैथ नहीं होता है, ठीक है. मैथ रीजनिंग में तुम लोगों को अलजेब्रा, कैलकुलस ये सब नहीं करना होगा, ठीक है. मैथ रीजनिंग होती है. रीजनिंग मतलब लॉजिक, तुम लोगों को परसेंटेजेस के साथ डील करना होगा, ठीक है. तो ये ऐसा सेक्शन होता है मैथ और साइंस रीजनिंग का जो कि तुम लोगों ने अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई है ना, तो भी तुम लोग जाके इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो. बट अगेन जस्ट टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करके जाना. प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, रिसोर्सेज तुम्हारे सामने लिखे हुए. पर्सनली मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने साइंसेस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, ठीक है. सो रीजनिंग की रिसोर्सेज हम लोग के सामने लिखी हुई है. So there's Kangaroo maps for math reasoning, ठीक है. I haven't used it, so I can't really elaborate on that कि किस तरह के resources हैं. Pretty sure मेरे like colleagues ने use की होंगी, तो they might want to add it after I cover my section.
Then you have SAT math. SAT math I've heard is really important, ठीक है, क्योंकि kind of इस तरह के ही सवाल आ रहे होते हैं AKU math reasoning में. Not exactly like that type, but similar होता है. Then you have the Panda math workbook. ये जितनी workbooks हैं मैथ रीजनिंग की, साइंस रीजनिंग की, इवन द साइंसेस वाले सेक्शन की, हम लोग एक ड्राइव की लिंक भेजेंगे, उसमें ये सारी बुक्स कंपाइल हुई होंगी. सो यू गाइस डोंट हैव टू वरी कि ये मैं बुक कहाँ से लूँ जाके या कहाँ से परचेज करूँ, ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है. एंड गाइस पीडीएफ की आदत डाल लो. नाउ यू गाइस आर मैच्योर इनफ, तुम लोगों को बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी इन योर मेड स्कूल एज वेल, तो डोंट गो फॉर द हार्ड कॉपी, ठीक है. ये नहीं करो कि सबकी जाके हार्ड कॉपी खरीद लो, बिकॉज दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे, ठीक है. अगर तुम लोग को मेड स्कूल में 3 बुक्स या 4 बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है, यू वोंट गो एंड बाय ऑल ऑफ दैट, राइट. तुम जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाओ, पीडीएफ का यूज करना, बिकॉज लाइक दैट इज द वे यू गोना स्टडी. Sibgha, can you go back please just for 1 minute? Yeah. So yeah, just pdf की आदत डालो. एंड देन साइंस रीजनिंग की प्रैक्टिस तुम लोगों को एज सच कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा, बिकॉज AKU अगेन उन्होंने मैथ रीजनिंग और साइंस रीजनिंग का सिलेबस अपलोड नहीं किया हुआ है. सो साइंस रीजनिंग के लिए you're going to use the PreMed के questions, ठीक है, and the ACT science questions. ये जो ACT science questions हैं, I'll add that on the drive as well. Now जो साइंसेस की प्रैक्टिस है, तो इसकी प्रैक्टिस हो गई साइंस. तो बेसिकली मैथ रीजनिंग और साइंस रीजनिंग तुम लोग प्रैक्टिस से सीखते हो, ठीक है. अब साइंसेस की जो प्रैक्टिस है वो तुम लोग कहाँ से करोगे? साइंसेस की प्रैक्टिस के लिए पर्सनली मैंने PreMed.PK यूज किया था, बिकॉज PreMed.PK पे तुम लोगों को टॉपिकल क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, ठीक है. एंड क्लोजर टू द एग्जाम तुम लोग उसके ईयरली पेपर्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है. सिमिलरली वहाँ पर AKU एजुकेशन बोर्ड के तुम लोग पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, नॉट ऑन द PreMed की वेबसाइट, बट अलग से AKU एजुकेशन बोर्ड जो है इंटर का, वो तुम लोग वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड जो हमारी बोर्ड की बुक्स है उसके आखिर में भी क्वेश्चंस लिखे हुए, तो चाहो तो उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है. सो प्रैक्टिस के लिए PreMed.PK वुड बी माय गो टू चॉइस, बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ कंपाइल होकर टॉपिक वाइज भी और ईयर वाइज भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है. सो ये हो गई प्राइमरी रिसोर्सेज. नाउ जस्ट 2 more minutes and I'll go over the secondary resources as well. कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हमें SAT 2 की बुक्स पढ़नी चाहिए. SAT 2 में सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह के, ठीक है. पर्सनली मैंने यूज नहीं की थी. मैं तुम लोगों को वजह बता देता हूँ कि लोग सेकेंडरी रिसोर्सेज किस वजह से यूज करते हैं और किस वजह से यूज करनी चाहिए. सेकेंडरी रिसोर्सेज यानी कि पंजाब और फेडरल की बुक के अलावा जो बुक्स होती हैं वो किस लिए यूज करते हैं? दे मेनली यूज, अगर फॉर एग्जांपल पंजाब और फेडरल की बोर्ड की बुक्स में तुम लोगों को कोई ऐसा पैराग्राफ नजर आ रहा है जो तुम लोगों के ग्रामेटिकली समझ नहीं आ रहा, उसकी अंग्रेजी तुम लोगों को समझ नहीं आ रही, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत अजीब सी तरह से वेगली लिखा हुआ है, या कोई पिक्चर है जो तुम लोग अपने जहन में लाना चाह रहे हो लेकिन वो बोर्ड की बुक्स में इतनी अच्छी नहीं दी है, यू गो फॉर द सेकेंडरी रिसोर्सेज. कौन कौन सी हैं? वी हैव द SAT 2 बुक्स कैपलान की, वी हैव बैरेंस की बुक्स, ठीक है. अगेन मैंने इतनी यूज नहीं की थी, तुम लोग चाहो तो यूज कर सकते हो, बट अगेन कीप योर अपना जो लर्निंग है वो बेसिकली पंजाब और फेडरल पे रखो, ठीक है. सो सेकेंडरी का मैंने रीजन बता दिया कब यूज करनी है, ओनली फॉर बेटर क्वालिटी पिक्चर्स एंड बेटर ग्रामर, ठीक है. कैपलान की बुक्स हैं, योर पेरेंट्स की बुक्स हैं, ये सारी ड्राइव पे मौजूद होंगी. अलग से एक फोल्डर बना के, ठीक है, उसमें लिखा हुआ होगा सेकेंडरी रिसोर्सेज, ठीक है जी. सो दिस इज बेसिकली इट फॉर द रिसोर्सेज एंड आई विल पास इट ऑन टू Sibgha. Okay, so I'll mention a couple of things about the resources and then we can move on ahead. So about like the books, first of all, so biology, I'd say do it from the Punjab board, but like there are some chapters which are more about the human body systems, like the homeostasis, the kidney chapter. These chapters, I'd say also do them from federal. Apart from that, for chemistry, I'd say do it entirely from federal board, but do the organic part from the Punjab board, because it is much more detailed over there. Apart from that, what I'd say is have your syllabus printed out and like see which like learning objective goes with which books, the titles better, and then like use that book. I used to do that and I think that was helpful because that gave me a very good look on how AKU has designed its syllabus for the test. So I would only do the stuff that was mentioned in the syllabus and nothing outside of it. Okay, and apart from that, about the SAT subject books. So even if you don't want to read through them, read through the text of the books, I'd say still do the past papers, still do the chapter end questions, because those are
on point in how the AKU makes its test. I personally did use them, especially the Peterson SAT subject test books. You'll only find PDFs of them. You wouldn't find them anywhere, but those books are very useful. I think we've also added them in our drive. Use them. They are very similar to how AKU makes their test, and like doing the SAT subject test books would also help you in the science reasoning, because the question format, I at least found it to be very similar, especially the physics ones. And I'd say make a habit from the very start to time yourself. Even if you're doing topical questions, time yourself. Put up a timer of 15 minutes for 15 questions. 30 seconds for like 15 questions, something around that. Like, okay, just test yourself with time, because the time is a huge issue in the test. Apart from that, now we're going to move forward to the extracurriculars. Does anyone else have to talk about the resources? We can do that, or we can move towards extracurriculars. Zainab, Taha, Talha, Oun, anyone, if you have to add anything, let me know. I think you guys covered it really well. All right. One thing more, I also did not do a lot of science reasoning and math reasoning questions. I used Kangaroo Math. I'd say start with like the baseline level, use the 5 to 6 first, and then move on to like 7, 8. Basically build your momentum through that. The questions are very hard. They like teach you how to solve questions rather than give you an insight into how AKU made their questions. So I'd say do Kangaroo Math because the questions are very tough and they're going to challenge you in a certain way. Apart from that, I'd say do mocks. The only science reasoning practice I did was pre-med mocks, because the one of the questions was also repeated, so it gave me a very nice picture of how the actual test is going to be. So do the mocks for sure, and do them timed. That is very important. So now we're going to move towards the extracurriculars. Sibgha, there's one thing I would like to add. Yes, sure, go ahead. Okay, so for me, I personally took A-level math and I got an A star in that. And there was a friend with me who was also giving the AQU test, and she did not take math. And one of the primary concerns for her was that the math would be like usme integration hogi, differentiation hogi, it would be very hard. Yeah, concepts honge that we have not covered in metric or O level. So it would be out of bounds of that syllabus. But take it from me, I did A-level maths and I know that nothing of that sort comes in the test. So you do not need to worry about math being otherworldly, math being koi pata nahi, out of the realms of aapki understanding. It's going to be basically more of a test of your IQ level, whether you're paying attention to the statements, are you good at interpreting the information that is provided to you in different forms, in graphs, in figures and facts. So you do not need to worry about that. Do not worry about the information influx for math, more on focus on your IQ, training your brain into doing math problem solving. Focus on problem solving and not on content for the math reasoning. That's all from me. Yes, that's brilliant. Now we'll move on to ECAs, extracurriculars, because they play a very important role in the whole AKU admission process. First of all, we're going to have Oun, who is from an FSC background, to go through this, because I know a lot of FSC students are very concerned about their extracurriculars. So Oun, if you can take the floor now. So as I introduced myself earlier, I did my FSC and matric from Rawalpindi. So being from an APS ka background and FSC background, I really saw that बहुत कम बच्चों ने apply किया था इधर, मतलब in proportion to government medical colleges, very few people applied here, and उसके साथ इसी वजह से इनके जो बच्चे AKU में जो बच्चे पास होके आते हैं, उनका भी proportion FSC students का कम होता है in comparison to A-level students. The basic reason behind that is, I discussed with my friends why they didn't even register for the test. The basic reason behind is people tend to give more attention to what their fee structure is, what Aga Khan's fee structure is. So Varisha would be telling us more about scholarship and financial assistance programs later, but I would just like to clarify pehle se hi, कि it's not like you have to pay all of that. If you really prove to Aga Khan कि आप Aga Khan में पढ़ने के लायक हैं and they really select you, you can apply for scholarship, you can apply for financial aid, and बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको जिस हद तक चाहिए होती है उनको वो मिल जाती है. तो there is no issue for please don't hesitate applying here because of money issues or financial issues. They'll cover you. अच्छा, तो being an FSC student, मुझे खुद AQ का इतना नहीं पता था. I had a friend, I think वो इधर मीटिंग में ही होगा,
उसने मुझे गाइड किया, उसने कहा कि आप जाके AKU के लिए रजिस्टर करो, एंड देन ही गाइडेड मी थ्रू द बुक्स एंड स्टफ. तो बेसिकली व्हाट ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स सेड, दे बेसिकली फ्रॉम ओ लेवल ए लेवल बैकग्राउंड्स. तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स की हैं. मैं इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं कर सकता था, मैं दावर की तरह हूँ. मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया. व्हाट आई डिड वाज, मेरा फेडरल बोर्ड से बैकग्राउंड है, तो आई डिड फेडरल बोर्ड की बायोलॉजी, फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री एंड फेडरल बोर्ड की फिजिक्स. तो बेसिकली उसको मैंने किया, सिर्फ उन 3 बुक से किया था, लेकिन जो किया था उसको सही से किया था. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द कॉन्सेप्ट्स इन द फेडरल बोर्ड बुक्स वर ऑलमोस्ट द सेम, मतलब दे वर एग्जैक्टली द सेम एज those that came in AKU का टेस्ट. In fact, there were some statements जो सिर्फ एक जो मैंने I shared with all of my batchmates here as well, that कुछ ऐसी statements भी थी that were exactly from फेडरल बोर्ड की बुक की लाइंस थी, जो उन्होंने उठा के AKU के टेस्ट में दे दी थी. तो इफ़ यू आर अ फेडरल बोर्ड का स्टूडेंट, यू नो कि AKU के टेस्ट के करीब करीब हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे होते हैं. इनके तो आई थिंक CIE पहले ही हो जाते हैं, बट हमारे उसके करीब करीब बोर्ड एग्जाम्स हो रहे होते हैं. वी हैव टू बाकी भी सारी चीज़ें साथ चल रही होती हैं. हमारे उससे पहले प्री बोर्ड चल रहे होते हैं. तो इफ़ यू आर डूइंग योर प्री बोर्ड की तैयारी सही से, एंड इफ़ यू आर डूइंग योर बोर्ड की तैयारी सही से, ट्रस्ट मी, यू आर गोना एस इट. जो थोड़ी सी चीज़ रह जाती है हमारे FSC स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज हमारा जो लास्ट इंट्रैक्शन होता है वो मैथ्स से, दैट इज़ इन 10th. मैट्रिक के बाद हम लोगों में से कोई भी मैथ्स नहीं करता, एंड उस वजह से हमें लगता है कि हमारा मैथ्स रीजनिंग में आके रह जाएगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग और साइंटिफिक रीजनिंग सेपरेटली उनकी परसेंटेज मैटर करती है, और साइंस सब्जेक्ट्स की सेपरेटली मैटर करती है. तो वी थिंक कि हम लोग का उधर रह जाएगा. बट what I did was, that very friend suggested me a book. It was Barron's Maths. It was basic maths book. तो उसके मैंने ज़्यादा नहीं किए, उसके मैंने सिर्फ बेसिक उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए कि मैथ्स के कौन से कॉन्सेप्ट्स होने. एंड उसके as that would have been, उसके बिल्कुल exact concepts, कुछ उसके even questions came into AKU का वो. So you don't need to, as Balaj and Sibgha mentioned, you don't need to have बहुत ज़्यादा grip over maths to clear this. आपको सिर्फ basic maths आना चाहिए. You need to know how to do proportions and ratios and all of this and algebra. ये करें तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा. तो for me as an FSC student, मेरे साथ काफ़ी और भी मतलब I remember मेरे अपने I used to go to academy, उधर 3-4 और बच्चे भी थे जिन्होंने क्लियर कर लिया था. तो मैंने asked them, they told me कि FSC जो AQ का टेस्ट था वो क्लियर करना मुश्किल नहीं था, but for who? अच्छा, तो बेसिकली मैंने बता दिया मैंने कितना पढ़ा हुआ था. There were some girls हमारे साथ थी, लड़कियाँ, हमारी अकेडमी थी, मेरी क्लासमेट्स थी. What they did was, उन्होंने फेडरल, पंजाब, सिंध, KPK एंड इवन AKU बोर्ड की सारी बुक्स पढ़ी थी, पूरा सिलेबस पढ़ा था. They didn't even regard AKU की वो. एंड उसके बाद उन्होंने A levels की भी तैयारी शुरू कर दी थी. मतलब वो सारा कुछ करने के बाद उसको दोबारा शुरू करके, और वो साथ गाइड्स भी कर रहे, और ये भी कर रहे, और वो भी कर रहे. एंड आई थिंक देयर वर 3-4 ऑफ दोज, एंड उनमें से किसी का भी नहीं हुआ. बिकॉज व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने टेस्ट में जाके they were under confident, although उन्होंने इतनी तैयारी की हुई थी. They were scared. They told me कि they were scared. They couldn't figure the test out. The timing, they couldn't time their questions properly. किसी जगह पे ज़्यादा attention दे दी, किसी जगह पे कम attention दे दी, and they couldn't. और जो हम चारों जन का हो गया था, हम सारों का यही चांस था कि it was basically the same paper we used to give हर जगह. There was nothing different. हमारा टाइम भी सही से मैनेज हो गया, और हमारा पेपर भी क्लियर हो गया. Why? Because we were cool and calm. So basically this thing would matter a lot test date में, क्योंकि there were over 1,000 students. I think Islamabad में there were at least 500 in the same hall I was sitting. So it's going to be very large. There are going to be a lot of people, and you need to know how to control your nerves to pass that test. अच्छा, टेस्ट पास हो जाएगा. It's not going to be very difficult अगर आप cool रख सकते हैं अपने आप को. You're going to pass the test. They're going to give you एक step 2 का parchment form भेजते हैं आपको, जिसमें आपने असल मसला FSC स्टूडेंट को हम लोग इधर आता है. बिकॉज आई रिमेंबर हमारे जब वो जो इनिशियल 300 होते हैं, जिन 300 के बाद कट ऑफ हो जाते हैं सारे, जिनका आखिरी बच्चे की कट ऑफ हुआ आती है, उन वो सारे बच्चे जो थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे FSC के थे. बट व्हेन द लिस्ट केम, जिसमें टॉप 100 आने थे, जिन्होंने AKU आना था, उनमें सिर्फ 3 से 4 बच्चे थे इनिशियल लिस्ट में FSC के. बाद में जाके बच्चे ज़्यादा हो गए. आई वाज लाइक, मैं खुद 60 से 70 ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो FSC के, उनमें से सिर्फ 3 से 4 बच्चे हैं. तो बेसिकली हमारा सारा मसला इधर आ जाता है. एंड व्हाट मेरा अगला पॉइंट इसी पे आएगा कि उसमें होता क्या है. उसमें बेसिकली आपने अपने सारे के सारे को करिकुलर स्टार्ट करना होता है. अब उधर हर तरह का को करिकुलर आ जाएगा. उन्होंने 5 कैटेगरीज बनाई होती हैं.
उस को करिकुलर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने पहले से को करिकुलर्स किए हुए हैं या आप अभी तक आपकी अपने कॉलेजेस के साथ या स्कूल्स के साथ एफिलिएशन होगी, तो आपने अगर सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाए हुए को करिकुलर्स के, गो टू योर स्कूल्स, गो टू योर कॉलेजेस, क्योंकि मैंने नहीं बनवाए हुए थे। आई वाज लाइक सही है, मुझे सर्टिफिकेट्स की बाद में क्या जरूरत है। तो आई वेंट टू द प्रिंसिपल, उनके पास रिकॉर्ड तो होता है कि इस बच्चे ने इधर भी पार्ट लिया था, इधर भी पार्ट लिया था। तो दे मेक द और ये भी लॉग पड़ा होता है कि कब कौन सा इवेंट हुआ था। So they make the certificates. I made the certificates, and I think those certificates helped a lot because the step two form, it's basically आपने अपनी एक real information देनी होती है because you're part of the final 300 or 350, and you might be one of those who's gonna join AKU, and आपका proper 2 दफा इंटरव्यू लिया जाएगा। तो बेसिकली स्टेप टू फॉर्म, उसमें सारे को करिकुलर्स आके आप बेसिकली उधर उसमें कैटेगरीज बनी होती हैं। दिस कैटेगरी फॉर स्पोर्ट्स की कैटेगरी ने बिल्कुल अलग की है। तो इस स्पोर्ट्स की कैटेगरी में यू कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू प्ले कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, इफ यू प्ले दैट, इवन इफ यू प्ले दैट इन योर एली वे या अपने घर के पीछे कहीं पे खेलते हैं, यू कैन मेंशन दैट एज वेल। अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं भी है फिर भी, हाँ, अगर आपके पास किसी का सर्टिफिकेट, आप किसी रीजनल टूर्नामेंट में गए थे, आपने अपने स्कूल की तरफ से खेला था, इंटर स्कूल सेंटर कॉलेज था, आप कॉलेज टीम के बास्केटबॉल के कैप्टन थे या फुटबॉल के कैप्टन थे, आप किसी भी स्पोर्ट्स उसके कैप्टन थे, वो आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स बने तो गिव प्रेफरेंस टू दैट, उसको प्रेफरेंस दें। और बाद में अगर वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, ऑल्सो आपको जो जो स्पोर्ट आता है आप लिख दें, आपको जो जो स्पोर्ट थोड़ा सा भी आपको पता है कि आइडिया है और आप खेल लेते हैं, उसको मेंशन कर दें बिकॉज दैट हेल्प्स अ लॉट। उसके बाद सारे स्कूल इंटर स्कूल मैचेस हो गए, आप किसी गली में जाके खेलते हैं, आप किसी मैदान में खेलते हैं, आप रोज जाते हैं, आप हाइकिंग पे जा रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, मेंशन ऑल ऑफ दीज। देन एक इधर हम लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग पे किया हुआ, बट देयर वाज दिस जहाँ पे उन्होंने लिटरेचर वगैरह का कोई किया हुआ था, तो वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का भी आ जाता है, वहाँ पे आपका ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में आपने किसी क्रिएटिव किया वो भी आ जाता है। आपने अगर कोई नेशनल लेवल पे जैसे कैंगरू वगैरह या ये आई डोंट रिमेम्बर द नेम करेक्टली, वो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स आते रहते हैं, उनमें पार्ट लिया हुआ है, वो भी आ जाता है। तो एमयूएंस भी आ जाती हैं, डिबेट्स भी आ जाती हैं, एंड एनीथिंग, बेसिकली एनीथिंग आपने जिसमें पार्ट लिया हो, आपके पास सर्टिफिकेट्स, क्योंकि दे डिमांड, अगर आपके पास आप मेंशन कर रहे हैं आगे प्रूफ प्रोवाइडेड भी लिखा होता है, इफ यू आर गिविंग अ प्रूफ दे डिमांड सर्टिफिकेट्स। इफ यू हैव द सर्टिफिकेट्स टू बैक अप आपकी जितनी भी वो हैं, it really adds up to your credibility, it really makes you credible। तो दैट उसके बाद था वॉलंटरी वर्क का। वॉलंटरी वर्क का तब फ्लड उधर फ्लड जाता पाकिस्तान में, एंड एवरीवन वाज गोइंग फॉर वॉलंटरी वर्क, बट हमारा क्योंकि एमकेट चल रहा था, तो वी बेसिकली couldn't go। लेकिन मेरे साथ जो 3 बच्चे थे, अब उनमें से I think I should share this because it's going to help everyone। So basically, yes, O-level sports matters as well. Sports matters everywhere. There's a proper column for sports. You have to mention other कौन से sports आप कर रहे हैं। अच्छा, तो basically, Sibgha will tell you we have a question and answer session later. None of your questions are being ignored. The speakers will be addressing you बाद में। अच्छा, तो बेसिकली कम्युनिटी वर्क, व्हाट वन ऑफ माय फ्रेंड दैट वाज, उसको AKU का एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, उसने पार्टिसिपेंट फिल करना था, जैसे मुझे कम्युनिटी वर्क में मुझसे भरा नहीं जा रहा, तो मैं ऐसा करूँगा कि उसके ना कोई जानने वाले थे, ही वाज इन अ स्पेसिफिक NGO ऑर्गेनाइजेशन थी जो फ्लड रिलीफ वर्क के लिए ना एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रही थी, आई कांट मेंशन द नेम। तो बेसिकली वेंट देयर उन डेट्स में जिस दिन के जिस पता चला कि उसने पार्टिसिपेंट फिल करना है, उसके 1-2 दिन बाद वो चला गया, एंड ही स्टेड देयर फॉर 2 days, एंड आते हुए वो सर्टिफिकेट बनवा के लाया विद द डेट एंड एवरीथिंग कि मैं इधर कम्युनिटी वर्क करती हूँ, लाइक मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, कम्युनिटी वर्क बहुत कम लोग करते हैं एवरीथिंग। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, द इंटरव्यूअर स्पेसिफिकली मेंशन्ड दिस पर्टिकुलर थिंग बाद में उसके सामने कि कम्युनिटी वर्क, व्हाट कम्युनिटी वर्क डिड यू डिड। उसने कहा कि ये मेरा लिखा हुआ, ये मेरा सर्टिफिकेट भी है। उसने कहा नहीं, ये सर्टिफिकेट तो आप तब बनवा के लें जब हमने आप लोगों को भेज दिया था, ये तो आप हमारे साथ दिखावा कर रहे हैं आगे। हम लोग ऐसे बच्चे को क्यों ले जो क्रेडिबल ही नहीं है, जो सिर्फ एक जगह में जाने के लिए अपने आप को इतना कर सकता है कि वो सिर्फ एक जगह में जाने के लिए वो अपने आप को उसी वक्त कम्युनिटी वर्क के नाम पे धोखा दे सकते हैं लोगों को। दिस वॉज वॉट द इंटरव्यूअर एग्जैक्टली सेड। तो if you can do community work abhi, if you can work with any NGO or anything, or you can get उधर से certificate or appreciation letters, do that। अभी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह भी जो अभी भी उधर इस्लामाबाद वगैरह में कर रहे हैं, और इधर हमारे बैचमेट भी काफ़ी जो कम्युनिटी वर्क वगैरह करके हैं, it really adds up to your step 2 form। Then there's student leadership. This also counts a lot because AKU, what AKU wants is इनका motto भी है कि they want to make leaders।
they want to lead the healthcare professionals. They want to be the leaders in that. So if you have I personally, I was the head boy in my college, so I mentioned that, and both the interviews and like that very much, and they asked me questions about it बहुत ज़्यादा, मतलब बाकी topics से ज़्यादा उन्होंने मुझसे इससे question किए थे. And जो मेरे बाकी दोस्त थे, who were class representatives or who were at a leadership post in their schools or colleges, और इस तरह का उन्होंने कभी कोई lead किया हुआ था, the interviewers really like that as well. अब I can't tell you कि मुझे किस चीज़ पे जज किया गया था, but I can tell you कि interviewer से हमारे पे उसके expressions किस तरह के थे, how he reacted, और उससे हम लोग gauge कर सकते हैं कि how basically the interview went. Then there's internships. हमारे 3 दोस्त थे. There was Sibgha, there was 2 of my other friends who were with PreMed. I think you guys added that as well in your step 2 forms as interns, and this internships also matters a lot. The internships also matter a lot, and then there's other internships and everything. So basically, this is how you're gonna progress with your step 2 form. So basically, step 2 form होता है, and step 2 form का result तब तक नहीं आता जब तक आप दोनों interviews नहीं दे देते. तो basically, step 2 form भेज के फिर वो आपको date देते हैं, and there's a double interview. Now there's a purpose for all 3 of these. जो आपके step 2 का form होता है वो interviews के पास नहीं जाता. जो आप पहले interviewer को interview देते हैं वो आपके दूसरे interviewer के पास नहीं आता. तो all 3 of these are confidential and they are checked by the student selecting committee बाद में आके. तो अब when you go for the interview, make sure that you're credible, make sure that whatever you said is truly honest and stand on your statement. वो आपको इधर उधर करने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ये नहीं तो ये भी कर सकते हो. वो बाद में mock sessions PreMed भी conduct कराता है, mock interviews when you guys are finally selected. इंशाल्लाह we'll be seeing a lot of you here. तो हम आपको बता देते हैं कि वो ये करेंगे, ये मतलब वो basically आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी स्टेटमेंट से पीछे हटेंगे कि नहीं हटेंगे. तो टेस्ट क्लियर करने के लिए स्टे कूल, जितना आपने किया है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होके जाएं, जितना आप बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करके आएँ. आई थिंक ये पेपर का बताना भूल गया हम लोग के साइंटिफिक, वो बाद में आपको पता चल जाता है पेपर में कि साइंसेस वाले पोर्शन में नेगेटिव मार्किंग होती है, दूसरे में नहीं होती. तो हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर वो बाद में आ जाता है. एंड पेपर कूल होके दें. देन इंटरव्यूज एफएससी स्टूडेंट्स के लिए जस्ट डू को करिकुलर्स, अपना जितना को करिकुलर्स बेहतर कर सकते हैं करें, क्योंकि ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स को एक ही में यही एज होता है कि उनके को करिकुलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. वो एम्यूएंस में गए होते हैं, वो रीजनल उसमें गए होते हैं, वो नेशनल कॉम्पिटिशन में उन्होंने पार्ट लिया होता है, ये भी किया होता है, वो भी किया होता है. तो रियली दे हैव एन एज इस चीज़ की वजह से. तो आप भी को करिकुलर्स करें. देयर इज नो डाउट कि एफएससी स्टूडेंट्स हो सकते हैं अभी बाद में इनिशियली 100 के बाद वो वेट लिस्ट में बच्चे आ जाते हैं. एंड अभी हमारे पास देयर आर अराउंड 7-10 बच्चे एफएससी के. there's like 12-13% of our students in our batch who are from FSC background. तो अभी मेरे साथ भी एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ दोस्त बैठे हैं उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया था कि पीपल से तुम तो एफएससी से तुम्हारा एक ही में हो नहीं सकता, उधर सारे ए लेवल्स वाले बच्चे जा रहे होते हैं. भाई इस तरह के कुछ भी नहीं होता. Even if you are from FSC you can do great, and hope to see you guys for the mock interviews inshallah. Asha, I would just like to sorry Sibgha, I would just like to add something to this. देखो जो ऑन ने एडवाइस दिया दैट इज रियली रियली गुड. ठीक है, इट इज ट्रू कि AKU में ए लेवल्स की प्रोपोर्शन ज्यादा होती है, बट इट इज नॉट मीन कि एफएससी वालों का एडमिशन हो ही नहीं सकता. यू गाइस शुड अप्लाई. एंड तुम लोगों को ये देखना चाहिए कि ए लेवल्स वालों का रिलेटिवली प्रोपोर्शन AKU में ज्यादा क्यों होता है. यू नीड टू रियलाइज कि ए लेवल्स वालों में से क्या होता है कि AKU प्रेफर्स देम इन मेजॉरिटी. ठीक है, तो ए लेवल्स वालों की ECAs भी होते हैं एंड उनके एकेडमिक्स भी होते हैं. नाउ एडवाइस जो मैं ऐड करना चाहूँगा इज लाइक फॉर 2 ग्रुप्स. ठीक है, एक ग्रुप वो है जो अभी शायद AS में है या अपने फर्स्ट ईयर में. तुम लोगों के पास टाइम है. ठीक है, प्रीटी श्योर इसमें कुछ सेशन में कुछ लोग होंगे जो AS के हैं या फर्स्ट ईयर के हैं. तुम लोग के पास टाइम है. फोकस ऑन ECAs एंड फोकस ऑन योर एकेडमिक्स. ठीक है, ये टाइम होता है ECAs करने का. जब तुम लोग सेकंड ईयर या A2 में आओगे ना, तुम लोग के पास टाइम नहीं होगा. यू विल बी बिजी विथ योर बोर्ड एग्जाम्स या A लेवल एग्जाम्स एंड यू विल बी बिजी विथ योर AKU टेस्ट की प्रेपरेशन और MD कैट की प्रेपरेशन. वो टाइम नहीं होगा ECAs करने का. ठीक है, और अब उनके लिए एडवाइस है जो आप A2 में है या Year 2 में है, तुम लोग का टाइम निकल गया है ECAs का. डोंट फोकस ऑन ECAs नाउ. अगर तुम लोग अब ECAs में जाओगे तो इट इज गोना मेस अप योर एकेडमिक्स बैडली. ठीक है, डोंट गो फॉर ECAs राइट नाउ. तुम लोग अभी सिर्फ अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दो, क्योंकि दैट इज द प्राइमरी थिंग. ठीक है, जो कि AKU देखता है. ECAs वगैरह सेकेंडरी पे होते हैं. ठीक है,
तो अगर तुम लोग के पास एक decent amount of ECAs है, तो don't worry, you guys have a really good chance. Academics पे ध्यान दो अपना. Year 2 अब आ गया, ठीक है? तो अच्छा, ECS नहीं है, ये ECAs हैं. So extra curricular activities, पढ़ाई के अलावा जो और activities होती हैं, debates वगैरह या matches वगैरह, all of that, ठीक है? So year 2 वालों और A2 वालों, तुम लोग का टाइम निकल गया है. Focus on your studies, ठीक है? अभी just don't get distracted. और AS वालों, तुम लोग जान मार दो ECAs वगैरह. All right. अच्छा, तो एडिंग ऑन टू बलाज, सिर्फ एक वन लास्ट थिंग, इट्स कि बेशक एफएससी वाले जो सेकंड ईयर में उन वालों का और जो A2 में उन वालों का टाइम गुजर चुका है, लेकिन आप बाद में जाके ये भी अगर अभी आपके पास बाद में फ्री टाइम होता है AKU के टेस्ट के बाद, MCAT के टेस्ट के बाद, उससे पहले इंटरव्यू से थोड़ा सा पहले, इवन इफ यू स्टार्ट टू कुक देन, क्योंकि कुकिंग तो आप मतलब आई पर्सनली एडेड कुकिंग, और उसने इंटरव्यू में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस किए थे कि व्हाट कैन यू कुक. अच्छा, आप कुक भी कर सकते हैं, मतलब आप हॉस्टल में स्टेबल रह जाएंगे और ये सारा कुछ. इवन इफ यू कैन कुक, इवन इफ यू कैन लर्न अ न्यू एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट बाहर जाके, इवन इफ यू स्टार्ट अ न्यू हॉबी जिसका कोई ऐसा पर्टिकुलर सर्टिफिकेट नहीं होता, वो आप उसके बाद भी शुरू कर सकते हैं. घबराने की इतनी जरूरत नहीं है कि अगर अभी इतने ज्यादा ECAs नहीं है. तो बेसिकली यू गाइस कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बस क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए सर्टिफिकेट्स रखें. So I'm going to add one last thing to the extracurricular part, and that is that wherever you work, especially if it is with someone, like if you are shadowing a doctor, or if you're working at Shaukat Khanam, or if you're doing any internship, and if you did a good job there, I'd say ask them for a letter of recommendation. So if you attach that, can Zainab, can you like turn off your mic? It might be echoing a little. So what it does is it adds a lot of credibility and it makes your application very strong. I remember wherever I worked, I would like have good relationship with the person and I would ask them for letter of recommendation. If you only ask for letter of recommendation from your schools, but if you also attach that with like all of the activities that you did, it would show okay, you work nicely, you build connections nicely, and that would give a very good rapport, So if you can do that as well. And apart from that, one thing I'd say is all of this seems very overwhelming. There are a lot of sections to fill, but I would say stay true to yourself and whatever it is that you are passionate about. Mention that. I used to write, I mentioned that. I had a writing blog, I mentioned that. So, and my half of my application was just writing stuff, and that's all right. So don't think you have to like put away your hobbies and just focus on these categories. No, you don't. You have to focus on who you are basically, because that is also going to reflect in your interview. Now we will be moving forward. Here's something I would like to add. Okay, yeah, sure. Then I was going to go ahead. So go to the previous slide, please. Okay, so we're looking at these months and debate, and oftentimes they're not feasible for people because month's registration fee they can range from all the way to 4,000 to 5,000. So maybe there are people who do not have access to those resources. So I would like to encourage them to think outside the box, to look into options that might not be mainstream. For me, it was like, okay, I know how to apply henna, I know how to apply mehendi. So we used to have at our country clubs, that is country club, we used to have a Chand Raat celebration. So I set up a stall there, and whatever profits I got from there, I donated that. So I took initiative in that. And there's another thing, everything that you do, it doesn't have to be outside the house or something. If it has on mentioned to again. So my brother, he used to stutter. So I used to help him with his speech therapy. And I added that in my stage 2 form. And my interview, we had a 10-minute talk about that. He asked me how much time I used to invest in it, how we would work, and everything. So anything besides your curriculars, your academics, that shows some passion, that shows that you can take initiative, that shows that you can think outside the box to implement your passions, I would say go ahead and write about that, talk about that. You don't have to stick to these clear-cut pathways for yourself. Look for backdoor if you have to. That's all from me. And also don't shy from taking initiative. Reach out to people. I remember I asked one of my teachers who was teaching at another school if I could teach for a week at their school, and they let me do that. And that was another initiative that I put up in public speaking, even though it doesn't even belong there. But I was a teacher for 2 weeks and I did that. So
And you need to reach out to people. You need to ask for opportunities yourself. I come from a very small place. I don't have a lot of opportunities there, but you have to make space for your own self, and you have to abis analyze ki where can you like work and what can you work on. And sports does not need to be like huge sports, does not need to be national level cricket, vagera, just need to be small things. You just need to show your interest. Like on mentioned, whatever sports you play, add that. I didn't used to play like sports. I am more of an indoor sports person. I mentioned Scrabble in my application. So just do whatever you do, just add that. Okay, it's going to work out in the end. And as On and Balad said, don't worry about it if you're in your like second year or A2. Worry about it if you're in A1 right now. Like this is the time you need to work on your application. Take your holidays and make your application strong. Okay. Okay, now we're going to move forward. Varisha is going to talk about, Varisha, are you there? Okay, so Dawar, Yeah, I'm here. yeah, okay, you can take the floor now. You can talk about it. Yeah, okay. So extracurriculars as an A-level representative. I guess everybody pretty much covered it about how you should go forward with it. And if you're in AS, you can really work hard on it right now. But if you're in A2, you have very less time. And extracurriculars part is the stage 2 part and it comes later, like after you pass the test. But yeah, I know you're scared and you're worried right now because you have to fill the stage 2 form. So yeah, you can add things in the stage 2 form from the like 9th grade on. If you're in O levels, 9th grade onwards to your A2. So, and I mean, like you need extracurriculars for it, but you don't need them. Like you don't need to be all rounded. Like it does not have to be like you should like you be doing sports, internships, public speaking. You can do one thing and be good at it. You need like you can excel at it. So that's good. You don't need to be all-rounded person. If you're an all-rounded person, that's brilliant. But if you're not, that is completely okay. You can do something you're good at. Like if you're designing something, if you're painting something, that is something you can do and you can present that. You don't have to be a public speaker. Like if there's 300 people interviewing, 250 will be public speakers. So you're not. That is completely fine because it needs to show your personality, and that is okay if you're not something else which other people are. So now we'll be moving forward and we'll be talking about the financial aid and the scholarship aspect of the AKU application. That is something that concerns a lot of people. So I believe Varisha is going to talk about that. So we can move forward with financial aid and the scholarship stuff. Okay. So AKU offers financial aid to its students, but there are a few things you need to understand for the entire process. Firstly, financial aid is given to those students who ask for it. Like you need to fill a form given to you at the time of your admission. You'll receive it with the admission email, right? And it requires all kinds of the details of your financial status, your family possessions, etc. And you have to provide everything with evidence, like all the possessions you have, you need evidence for it. You cannot get financial aid without a basis, right? So you need evidence. Secondly, financial aid is of two types, as in it is broken in two parts, grants or loans. So if you get grants, you do not have to pay that part back. But if you get loan, you need to repay that back. But AKU is very lenient in that aspect. Like you don't need to repay it right after your graduation. You need to you can part 5 years and then you need to start repaying it back with the amount that AKU gives you. And also that if you work at AKU, your loan decreases to 50%. Your loan decreases to 50%. And yeah. So you've completed that part. And lastly, the most important thing is that AKU does not know who needs financial aid, right? So at the time of your admission, you don't need to say anything to them or fill any form that you need financial aid. They don't know it. And you only get to know
you only get to fill the financial aid form after you've received your admission acceptance. So it's the selection process is completely blind and fair. They don't know that you don't belong to, like, you don't have the resources to pay to AKU, but they don't know that, and they select you on the basis of your capability and your ability. So yeah, and most people don't apply to AKU because of the cost, and they don't know about the financial aid. But AKU is very, very lenient in that matter, and it does provide you a lot of financial aid you need and the amount you need, because yes, it is expensive, but AKU really, really helps you in that. Also, there is scholarships, and it is also on the website that it gives at least five fully funded scholarships. But they've recently changed their pattern of that, and you can only get it if you submit the financial assistance form, right? If you apply for financial assistance, and obviously you need the evidence for it, you need to provide all the requirements mentioned in that financial assistance form. So, and not many people get it, and it's like need and merit based. So you need to be high on the merit list of AKU. Also, you need to be high in the list of need and the financial assistance thing. So yeah. Okay, so now, first of all, what I'll say is about the scholarships. There are only 5 scholarships, and they're given need and merit come based. And believe me, AKU is very fair with that. It sees very nicely who is on merit, but also who needs it, who actually genuinely cannot pay for the fees, and then it gives them the aid. The scholarship. And apart from that, the scholarship is like 100% free. You also get a stipend. So aim for that, take the good score, and like if you need it, you're gonna get it. Don't limit your dreams because of your resources. A lot of us at AKU do apply for financial aid, and we are studying at financial aid, and that is completely all right. Say as a do not like just not apply. It is a very small factor. It does not matter at all. Your dreams matter, your hard work matters, and what you are going to do after your degree, that is what matters. So yeah, now we're going to move on to the comparison between government and government universities and AKU, because a lot of people come to that decision. And On is going to talk about that. Yeah, On and Balaj, I believe, are going to talk about that. So yeah, the floor is yours, and you guys can talk about it. On, you can go first. Okay, so I can go ahead and I can talk about it. So basically, my Punjab domicile, and I did manage to get into a Punjab government college, but I chose AKU over the government universities because of a few reasons. It is a decision that you have to make after contemplating a lot of factors, but I chose AKU because I believed I made list, and I compared the academic, the campus life, and the fees, and like how it's going to affect me after 5 years. So the academics, as we all know, AKU has a modular system, which means that it divides the education that you need to have into modules. Basically, we're going to have like the blood module, the renal module, the cardiology module. We're not going to have like pharmacology in 1 year. To have it all divided into small modules based on like one human body system. That is something that spoke to me. Okay, I wanted to do it. And then because I cannot study like pharmacology puri without a central focus on it. So that's why I went with a modular system. Most government universities in Punjab, they have the other system, which is like the yearly system, the annual system. Apart from that, AKU has PBLs and TBLs. But what that means is every week, like if in each module presented with a case, and then we have a team, and then we discuss that. We like analyze the symptoms and the signs that are presented to us, and we try to solve that case. So that is another reason why how AKU like, and I personally believe that would help me be a good physician at the end of the day, and that's why like that spoke to me more about AKU.
After that, team-based learning is also the same. We have small group classes and large format classes. Small group classes, we get to interact with the teacher in a very nice way. We get to present, we get to like hone all of our skills. We get to develop as a human, basically. We get to develop our public speaking skills, our communication skills, a lot of our skills, basically. Okay. So apart from that, then there's campus life. AQ has a lot of societies. I'm not sure about government universities. I don't think they have a lot of exposure in that. You get a lot of exposure through seniors here. You can do a lot of research here because AKU has the labs. AKU has the research modules in first, second, third year where you can like build your connections, build your skills, and do research. Then there's a sports center here where you can like um, have sports. Okay, so now Balaj is going to talk about more about the government university stuff. Yes, I think Balaj is going to take over. Yeah. So, government universities versus AKU. The first difference, जो तुम लोगों को नजर आएगा, like Sibgha said, was the system of teaching there. ठीक है? So, AKU follows a modular system. ठीक है? And AKU में there are defined formats of classes. ठीक है? जैसे कि तुम्हारा large class format होगा. There are short classes. There are PBLs, problem-based learning. So, AKU is very specific about the teaching methodology. ठीक है? More specific than any other public institution, I would say. Okay. Acha. Sibgha, you want me to cover the application process, or should I just talk about it in general? I think just talk about it in general. Just talk about the differences and why you chose AKU over Dow, right? All right, perfect. Acha, say it. So I applied to the public universities as well, and my main decision was between my main decision was between AKU and Dow. Okay, so I had to choose one of them. Now, the problem that I was initially facing with AKU was the high fees. Okay, AKU ki fees is, I agree, बहुत ज़्यादा है. I was waiting for the financial aid decision, and that is why I say कि तुम लोगों को apply करना चाहिए, because I know AKU ki fees is a lot, but they do offer financial aid. And मेरा जो final decision था between Dow and AKU, which is like a big decision for anyone, because you're gonna spend the next 5 years. मैंने वो decision mainly because of financial aid liya tha, because AKU offered me financial aid right at the last moment, and I took the chance. Okay? I'm not saying that Dow is a bad institution. It's a really, really great institution. Okay? You guys should apply to public universities as well. And by the way, you guys will be applying for public universities as well, because that is how this should be taken. Don't just apply to AKU. Dono mein apply karna, because you never know. AKU might not choose you. Okay? So just be on the safe side. All right. Now, campus life. So AKU की campus life is great. ठीक है? AKU is like your second home. ठीक है? तुम लोग कोई और शहरों से आ रहे होगे, तो it will be your home. But even for Karachi, yeah, it's just a home. ठीक है? So you're gonna spend probably like शुरू से ही हमारी like first week में हम लोगों ने देख लिया, we're spending like 8 hours on campus. Okay, which is like a lot of time. So AKU has gym, AKU has swimming pool, AKU has like वहाँ पे तुम खाना खा सकते हो, you can rest there. ठीक है? So it's basically like your second home. You're with your friends, with your colleagues वहाँ पे. ठीक है? You're gonna spend time studying वहाँ पे. There are great library, there are great student lounges. You can do group studies. ठीक है? So that is basically AKU for you. All right. Then again, fee structure. This like itna gap hai between private and institution fees, but it's safe to say that AKU जो fees charge करता है, it is worth it. Bilkul, it is worth it, because I have a lot of reasons for that. First, that is really different from public institutions. Okay? Then you're getting a big campus. Okay? You're getting a lot of facilities. You're getting a lot of resources. Plus, AKU की जो faculty है, they are really approachable. ठीक है? They're gonna involve you in your research projects. They're gonna वहाँ पे conferences होती हैं from international doctors and like well-known doctors. ठीक है? So like world famous doctors वहाँ पे आते हैं for for speaking basically. So you have a lot of guidance वहाँ पे. The whole community is just great. Plus एक बहुत ही छोटी community है. It's a very short community. बहुत छोटी community है. So you build better relations with your colleagues and with your seniors. ठीक है? Year 3 के बाद जब rounds होते हैं, तो public institutions में usually ये होता है कि एक doctor के साथ बहुत सारे बच्चे rounds पे जा रहे होते हैं, because वहाँ पे बहुत सारे batch में लोग होते हैं. ठीक है? There are like 300 in public universities के batch. AKU का batch बहुत छोटा होता है. So you have that one-on-one kind of attention with your facilitator. ठीक है? So I would say
the fees, it's really worth it. Plus, तुम लोगों को financial aid offer होती है, so just don't worry about the fees. Apply to AKU and on to Sibgha. Okay, so I guess that's it. That's it about the government university versus AKU. It is a decision that you have to make at the end of the day by seeing all of your factors and by seeing where would you fit. Basically, a lot of people have to move places, so you'll have to think about the fact: are you comfortable leaving your house? I am a hostelite. Zainab is a hostelite. Dawar is a hostelite. Oun is a hostelite. All of us are left our homes, left our parents, and we came here. That's also another factor you have to think about, because a lot of times the government universities that you get in are in your own cities. So think about all of it, make a rational decision, and whatever you do, whatever you end up, trust God and trust your decision and just go for it. Basically, that's it for this. Okay, so now we're gonna move forward and we're gonna move towards I believe we're gonna move towards the mock reviews and the experience of our last year users, basically. So I think Zainab is gonna take that. So yeah, whoever's Yes, sir. taking that, just go ahead. Okay, can we have the next slide? Yes. Okay. So बहुत बड़ी यहाँ पर बातें हो गई. You've been bombarded with a lot of information. पता नहीं क्या the things, interviews, mocks, all of that. You've been hearing a lot for the past hour or so. So firstly, I would say take a deep breath. Don't get overwhelmed. Rest assured that if we could do it, you can too. If एक महीने पहले if I was praying कि अल्लाह ताला मेरा किस तरह AKU में हो जाए, AKU में हो जाए, and today I'm sitting here with the key of my hostel room in my hand, if I could do it, so can you. With all the, it may be a very uncertain time for you right now, but believe us, you have such a supportive community and team in the PreMed team here. They are always there for you. We are always there for you to help you with any query, with anything, any problem along the way. All times you can reach out to us, you can reach out to any of the members of the team, and they will be more than happy to help you. So as you can see yourself and read yourself from the reviews of our users, what they have to say. So let's just talk about what they had to say about our mock test that we prepared for the AKU test. So a lot of them said it really helped recreate this exam scenario and familiarize and get used to what the exam will be. It was timed, it had the exact same pattern as the test. So it helped them replicate the exam scenario. So it helped them ease the nerves and test day anxiety reduce kar di thi usne. So it also helped them with time management. They could time themselves, वो देख सकते थे कि कौन सा section is taking them कितना time, and that way they could plan accordingly. वो analyze कर सकते थे and they could strategize. कि if science reasoning is taking me more time, should I do it पहले, should I do it बाद? Because it is always किसी ने पहले किया था, मैंने science reasoning पहले किया था, a lot of people did it बाद में. So it is always effective, and if you mock from PreMed, help me strategize and come up with that. And another thing, it will help you revise a lot of the concepts that you studied. इतनी सारी books Balaj Ali-he ने बता दी हैं. The mocks and the question in the mocks will help you revise all those concepts, and as already mentioned, a lot of the questions from the mocks actually came in the AKU test. I think that's the biggest thing that proves our credibility. There can be nothing more जो हमारी credibility को prove करे. So moving on to the next slide, let's talk about how the mock interviews with the team members of PreMed helped us get into AKU. So as we already told you, there are going to be two interviews after the stage 2 form, and the PreMed team members were kind enough to take mock interviews with us. And those interviews were very thorough. We went over they went over all the questions. They gave a lot of constructive criticism at the end. They went over every single mistake that we made. और उन्होंने हमें pointers दिए कि personally मेरा वो कह रहे थे that you've been looking down
maintain eye contact. They pointed out the things that otherwise मुझे तो पता भी नहीं चलना था कि this is what I'm doing wrong. So they presented very personalized assistance. Different people have different problems. Maybe somebody has a confidence issue, somebody has a posture issue, somebody has needs help to formulate their answer in more cohesive or comprehensive way. So they are going to extend you very customized help. It's not going to be one size fits all. ये नहीं करेंगे. So they were very customized and in that aspect. Also, for a lot of us, it was the first big interview for us. Isliye that helped us give a general overview of idea how the interview is going to go, what questions are going to be asked. It was very good for a sort of a rehearsal. So and there's one more thing that I would like to add. I should have added it pehle, let me reiterate it right now. Okay, for now, put the interviews on the back burner. Abhi, do not think about it. Dawar said that for now, your priority, number one priority should be your board exams, your A-level exam, your FSC exams. After that, start worrying about the AQ test. And after you're done with your AQ test, you pass that, inshallah, then think about the interviews. Then move on to the next part. Break it down into bite-sized pieces. Do not overwhelm yourself. Take it step by step. Okay. As you can see, you can read yourself what a lot of our users said about our interviews and mock tests. So that's all from me. Sibgha, you can have the floor now. Okay, so now Talha is going to talk about how he as a reapplicant, he applied and how he got in and how now he's at AKU. So Talha, the floor is yours. Hey, can you all hear me? Yes, we can hear you perfectly. Okay, so I applied last year and I wasn't able to get in last year. I passed the test, but I didn't get through the interview. I wasn't planning on applying again, but a friend of mine, he convinced, I got into another med school basically, and I had a friend over there who was reapplying and he wanted someone to reapply with him. So he wanted another friend to reapply with him and he convinced me to reapply. And I think it was a pretty good idea because the opportunities and the facilities you get at Aga Khan, I don't think you get them anywhere else, at least in Pakistan. So what happened was I had a test, the AKU test. Obviously, all of you know about the AKU test. But one thing that's an obstacle, especially when you're already in med school, is that you have other tests going on as well. So I had a stage. A stage is basically an exam in anatomy in which you cover basically an entire limb or an entire region of the body. I had it 2 days after my AKU test. So what I had to do was basically I had to balance everything out. I had around 7 days. I gave around 3 days to the AKU test, 3 days to the stage I had. I ended up acing both. After this, basically, my friend, he didn't exactly pass, but I had another friend who did pass as well. Basically, 3 of us applied together. So I think it's a pretty good idea to, if you are a reapplicant, if you haven't gotten in last year and if you're trying again, it's not a bad idea to apply again because there's no bias towards people who haven't gotten in last year or the year, or basically if they're reapplicants. Another thing I'd like to add is that when you're giving your interview, just don't get nervous, don't get anxious, because it's supposed to be a normal conversation. The interviewer might want to put you under pressure. He's going to try to put you under stress, but you're just supposed to know that that's basically a technique. They're trying to assess you. So that did work on me last year. I did get nervous and I did get anxious and I forgot to say half the stuff that I had to say, but this year I knew what I had to say. I had it all planned. So just know that it's not something really big. It's not something really scary. So it's a normal conversation. You're going to be having a normal interview. Treat it like a conversation and inshallah, all of you are going to ace it. So I'd like to pass the floor back to Sibgha and we could continue the meeting. Okay, so now I think we'll just be talking about the general advice. And if there's anything that's left that anyone wants to say, we all can go ahead and talk about it. So you missed out on my journey from as a pre-med user to the pre-med member. I think yes, I was about to come back to that in the end, but yes, you can go ahead and talk about it. Yes. All right. Okay, sure. So, to wind it up before we start with the advice portion, I would just like to say, I know it seems really overwhelming. So a few of my juniors just messaged me and said, itni zyada cheezein, and people do so much stuff. And I'll just share my personal
like I just want you guys to pause the questions and just listen to me for a minute. ठीक है? I know मैं बहुत बोलता हूँ, but just listen to me for like a few minutes. ठीक है? And that'll be the end. So I'll just give you अपना थोड़ा सा like personal journey. ठीक है? So what happened with me was that all of my friends were basically going either abroad or they were aiming for LUMS या NUST. I did not have any friends who were aiming for like medical school. तो मेरा I had zero guidance. ठीक है? और मुझे कुछ नहीं पता था मैंने कहाँ से करना है, especially because I did A levels, तो I didn't even know कि कौन सी, मतलब मुझे last year around June में पता चला था, hardly a month before like the AKU test, that there are actually ये federal की किताबें भी होती हैं, मतलब 3-4 किताबें होती हैं, like I literally मुझे तब पता चला कि provinces की different किताबें होती हैं. I didn't even know before that. So for me, like the first 1 month was really horrible. जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी ना, I had zero guidance. And especially I didn't know anyone. ठीक है? मुझे ये नहीं, वरना यूजुअली होता है कि आपके कोई साथ दोस्त होना, if you have a support system कि अच्छा यार मैंने ये चीज़ कर ली है, तुमने ये की है नहीं की. If you have a support system like that now, so it's essentially really easy. But I didn't have anything like that. ठीक है? So for me, seeing all of my friends basically fly out to fly abroad, और बाकी मेरे फ्रेंड्स स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी, और मुझे ये नहीं पता था कि मैं 1 महीना बाद कहाँ पढ़ा पाऊंगा. मुझे ये नहीं पता था will I be in a private institution, will I be in a government institution, will I be taking a gap year, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं था. It was really difficult. ठीक है? Like trust me, it will be a really difficult time. And I just found pre-med really like randomly. दरवाजा बंद करना. अच्छा, so I found pre-med really randomly. मैं इंटरनेट पे I was searching for these PDFs. आप लोगों को शायद पता हो, there are like MD CAT के ना PDFs होते हैं of expected questions. So I was just like looking for those PDFs and I just stumbled upon this website. मुझे design बहुत प्यारा लगा and I just decided कि try out कर लेते हैं. And for me, I'll be honest, मुझे जो बस चीज़ मजे की लगी थी ना, वो statistics वाली चीज़ लगी थी. ठीक है? And I decided कि let's just use this website. अच्छी लग रही है, what's the harm in it? सस्ती है, कर लेते हैं. And I'm not here trying to sell you pre-med का मंजन कि हम आ जाओ, हम करें ये करें वो करें. What I'm trying to tell you is that essentially this website and this group of people didn't just help me with like the MCQs or with the test. ठीक है? It was more of a support system. ठीक है? And a support system that wasn't just सिर्फ AKU के test तक. ठीक है? But it was also once I cleared the test, once I needed help with my interviews, once I got in. ठीक है? इंशाल्लाह यहाँ पे जितने लोग हैं, इंशाल्लाह a lot of you will get in. And trust me, जो forms AKU भेजते हैं ना for financial aid, for the the general admission form, they're really difficult forms. इसमें कुछ समझ नहीं आता, बड़ी professional terms होती हैं. And a few of like my seniors are here. ठीक है? There's Taha bhai. ठीक है? And all of these people were really helpful. And one of the things that I think all of you perhaps missed, like बाकी Balaj वगैरह ने एक चीज miss कर दी, वो ये कि the people at AKU are really helpful, and that's something that I haven't seen. So मैं अपना घर छोड़ के, लाहौर छोड़ के, I'm living in a hostel. I've never lived without my family, and the people here are so helpful. And I'll just like to end with one small thing. So I got here and मेरी white coat ceremony Tuesday को थी. Sunday को I got COVID. ठीक है? And AKU quarantined me at this random hotel, and what happened was कि उन्होंने कहा कि आप अपनी white coat ceremony attend नहीं कर सकते. And it was really horrible. मतलब मैं full दुखी, I was alone. My parents were they didn't even allow my parents to come and visit me. And मुझे Fahad, who is one of the co-founders of PreMed, he messaged me. He said कि do you need soup? मैं soup भिजवा रहा हूँ. ठीक है? And he just randomly sent me soup. And that's just a really good example of how helpful these people are. ठीक है? कि आप इनको genuine 1000 सवाल भेजो बार बार. ठीक है? And they'll answer every single question that you have, and trust me, you really need that. ठीक है? Because and not only those questions, you also need to have that support system कि एक बंदा खड़ा हुआ है मेरे पीछे, मैं उसको 10 मिनट के voice notes भेजूंगा जिसमें I'm just saying कि यार नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा, वो हो रहा, and that person will basically be like हो जाएगा. And that is how PreMed essentially is. It's just not a website where you can just do MCQs. It's more of a family. It's more of this group of people that support you in this really bad period of your life. I'll just give you this thing. When we were trying to find speakers for this entire session, मेरे कुछ batchmates they said कि हमने PTSD relive नहीं करना. ठीक है? कि इतना horrible MD CAT का सारा period होता है कि वो कहते हैं वो कहता है हम लोगों को PTSD होती है, हमने बात ही नहीं करनी, chapter closed. So but at the same time, last point ये है कि it is worth it. ठीक है? I know all of you have this perception of AKU in your minds. ठीक है? I'm from Lahore ना, तो मैं कभी AKU गया नहीं था, मुझे पता नहीं था क्या होता है. ठीक है? कैसा campus है and everything. लेकिन trust me, what you're imagining उससे 100 गुना बेहतर है. ठीक है? And like it's just amazing. The people here are amazing. The life here is just amazing. ठीक है? Like there's
if you ask me कि government में जाना चाहिए करना चाहिए, I have a few of my batchmates like so I have a batchmate जिसने King Edward में 1 साल पढ़ा था, and she basically transferred to AKU. Transferred नहीं, like she gave the AKU test and she came to AKU. And similarly, I have like 3-4 other people who got into King Edward. So King Edward is Punjab ka highest merit ka college, and they got into King Edward and they decided कि नहीं हमने King Edward नहीं आना, हमने AKU आना, because the difference that AKU has. And again, the thing with AKU is कि you don't choose AKU. आप नहीं जाके कहते कि अच्छा मैंने दाखिला लेना है, AKU chooses you. ठीक है, एक दफा AKU ने कह दिया कि भाई this person is the kind of a person that we want in our college. ठीक है, they don't care if you can't support it. उन्हें अपने documents भेजो, they will give you financial aid. ठीक है, and if you're deserving, they'll give you scholarship. ठीक है, so like AKU is very student centered, every single thing. And like I know I've said this multiple times before, one last time, लेकिन genuinely one last time, वो ये बात है कि I'll just give you an example कि I went to the hostel for the first time. मैं मेरे hostel गया, मैं अपना सामान वगैरह रखना था, and my dad was with me. हम लोगों ने भी फीस वगैरह नहीं पे की थी, and हमने coordinator से पूछा कि फीस का क्या सीन है सारा, like where do we pay, and he told us कि आप लोग पहली दफा यहाँ पे आए हैं, आप लोग हमारे मेहमान हैं, फीस की कोई बात नहीं करनी, अगले साल तक you can literally pay by the end of your first year के profs. And the reason why I'm telling you this is कि AKU isn't like a private college. I know this personally because my sister is also in a private medical college in Lahore. तो उसका merit list में नाम आया, कॉल आई है कि 48 hours में आपने फीस पे करनी है, वरना आपकी सीट हम किसी और को दे देंगे. And that is generally how most of these colleges work. ठीक है, so AKU isn't like that. It's a proper university. It's a proper experience, and I hope कि inshallah अगले साल I'll see a lot of you. And one more thing is ये कि I've been ग्रुप में क्वेश्चंस लिखने हैं, ग्रुप में लिख दो. ठीक है, जितने भी सवाल हैं प्लीज आस्क. इफ यू गाइस जस्ट नीड गाइडेंस, अगर मेरे से मेरा एक्सपीरियंस पूछना है, ठीक है, बिकॉज मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू मैसेज सीनियर्स, आई वुड बी लाइक है कैसी, आई वाज इट इवन वर्थ इट, तो एंड ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट. ठीक है, so So yes, I think Dawar talked about everything in a lot of detail, and yes, you have to work hard, but you also have to believe in yourself and know, okay, you can do this. So yes, a lot of people sacrifice a lot to be here, and honestly, it is worth it. It feels worth it, even though it's so tiring. We need to walk a lot every day. But I when anyone who wants to ask, all of you can open your mics, the hosts, and then you can give your advice. And then we'll have a very small Q&A session, and then we'll be ending the session. Can I go first? Yes, Balaj, you can go first. I'll go in the end. All right. अच्छा, chat पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं about anxiety, about imposter syndrome. I think that is a really important point जो cover होना चाहिए. I realize कि पाकिस्तान में जो medical universities का sorry admission process है, वो बहुत ही mentally draining होता है, बहुत ही tiring होता है, and that is something I hate about the whole system. But it is what it is. You guys have to go through it. We have been through it. Our previous seniors have been through it, and your future generations, Allah na kare unko jana pade, but if the system remains the same, they will have to go through it as well. Now, the way to go around it is plan your studies. Plan your studies. ठीक है, ऐसा नहीं करना कि तुम लोग अभी ना पढ़ो. ठीक है, A levels के year 2 के बाद शुरू करो. काफी लोग शुरू करते हैं, but मसला ये होता है कि उन लोगों को बहुत सारा stuff cover करना पड़ता है in a very short amount of time. ठीक है, a lot of people do well under pressure. A lot of people crumble under pressure. वो लोग नहीं handle कर पाते. Plan it out. ठीक है. Also, do not compare your progress with others. ऐसे मत सोचना कि यार मेरा ये जो दोस्त है या मेरी ये जो दोस्त है, इसने 2 महीने में 50 या 60% सिलेबस कवर कर लिया और मैंने 3 महीने में अपना like 30% भी नहीं किया है. It's your journey, ठीक है? It's your you know your study style. Do not compare yourself with others. Only compare yourself with yourself, ठीक है? With your previous selves. So advices वगैरह, motivation वगैरह, ठीक है? You guys generate the motivation yourselves, ठीक है? तुम लोग अपना स्टडी प्लान खुद समझते हो बेहतर. तुम लोग को पता है कि मैं वीडियो से ज्यादा बेहतर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, या मैं किताबों से ज्यादा बेहतर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ. यू गाइस नो कि मैं प्रेशर में कितना प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ठीक है, सो प्लान इट आउट. डू नॉट कंपेयर योरसेल्व्स. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. So that is the main advice from me. Acha, some people are asking about academies. Anis Hussain, user. My general advice मेरी ये है कि मेरे लिए they didn't work out as well as I thought they might.
because what they generally do is कि वो सारी fees शुरू में ले लेते हैं, ठीक है? And then when you realize later on कि they weren't that helpful, ठीक है, you can't take the money back because वो पहले ही ले लेते हैं, alright, सारे पैसे. तो please do not follow the whole group कि सही मेरे सारे दोस्त यूजर जा रहे हैं, सारे दोस्त डॉक्टर्स इन जा रहे हैं, सारे दोस्त अनीस हुसैन जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ. Do not, ठीक है. Generally speaking, they did not help me at all, ठीक है. They were just a waste of money and a waste of time. क्लास में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था, मैं अनीस हुसैन गया था, क्लास में टीचर्स आते हैं, दे लिटरली टेल यू द सेम थिंग जो कि किताबों में लिखी हुई होती हैं, एंड दे राइट दैट ऑन द बोर्ड, देन यू कॉपी दैट इन योर जर्नल एंड देन यू rectify that. So what's the point? Like book से पढ़ लो. So if you think तुम्हें help करेगा, academies talk to seniors, ठीक है. हो सकते हैं किसी को help करा हो, किसी को help ना करा हो. KIPS Academy, Anis Hussain, Huser, these are all the same type of institutions, ठीक है. There might be some pros and cons for each of them, but personally मुझे किसी academy ने, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अपने बैच में जिनको Huser ने नहीं help की, जिनको KIPS ने help नहीं की, जिनको Anis Hussain ने like नहीं help नहीं की. So do not follow everyone कि भाई मैं चला जाता हूँ like क्योंकि सब जा रहे हैं. Do not, ठीक है. पैसे ज़ाया होंगे, टाइम भी ज़ाया होगा. जितना टाइम, और by the way क्लासेस वहाँ बहुत लंबी होती है, ठीक है. 3-4 घंटे की क्लासेस होती हैं, तो उतना टाइम अगर तुम लोग क्लासेस में जाके दे रहे हो तो इतना ही टाइम तुम लोग खुद पढ़ने में लगा लो, ठीक है. So that is my advice. Others might have some different opinions, so they can hop in. Balaj, can I? Yeah, sure. Okay, so just a second. Acha. So yeah, there were a few things. So someone asked me, you mentioned. So someone just questioned over here, कि इतनी ज़्यादा you guys have mentioned कि बड़ा मुश्किल period है. So how do you essentially cope with it? So so the first thing is I'll just like tell you guys अपना थोड़ा सा schedule, just like थोड़ा सा मैं आपको अपना बताता हूँ. So I basically went to this academy in Lahore, which is called Stars, ठीक है, and it used to have classes from 5:30 a.m. till 11:30 a.m. You weren't given a break. बीच में teachers जब change होते थे, you could go out and like roam around, and that was it. ठीक है, you couldn't leave. You had to attend every single class. ठीक है, and there were classes like let's say logical reasoning होती थी, जिसमें वो लोग literally ना हमसे बिल्कुल basic चीजें करवा रहे होते थे for like 1 hour. And the thing is that it worked for a few people, but it most certainly didn't work for me. ठीक है, I hated that place. मुझे तो बहुत बुरा लगा था. ठीक है, and I personally मुझे कोई चीज़ नहीं समझ आई थी, and I went there for 2 weeks and then I had to drop out because मेरे से पढ़ाई नहीं जा रहा था. ठीक है, and it was really draining. And वहाँ पे there were kids that would tell me कि मैं तो दिन के 8-9 घंटे पढ़ता हूँ. ठीक है, and उसके बाद मैं academy भी आता हूँ, and that was really demotivating for me because I've never really studied that much in my entire life. Okay, so this is something that I'll advise you honestly, कि work smart, not hard. Okay, if you're working hard, so you might be like मैंने तो सारा IQ का syllabus करना है. If you're working smart, what you'll do is कि you'll see कि अच्छा ये मेरे 4 topics strong है, ठीक है, how can I make them strong? एक मेरा topic weak है, how can I make it less weak? ठीक है, don't, like I would say कि just work smartly. ठीक है, don't fall, just like Balaj said, just don't follow the herd. अपना तरीका, अपना रास्ता खुद निकालने की कोशिश करो. इसके अलावा in the chat box, how like interview, what happens if like the interviewer attacks your decision to take a gap year. So yeah, the interviewer is not biased against you taking a gap year. A lot of people do take gap years, and we apply to AKU. There are certain people जो कि 2-3. I have a friend in AKU. I believe she was on her 3rd gap year. ठीक है, and like उसने अपने 3rd gap year में AKU apply किया था, and she got into AKU. ठीक है, and I believe she also got financial aid. ठीक है, so उनको नहीं फर्क पड़ता, but you need to defend your decision. You need to tell them कि अच्छा मैंने क्यों लिया था. आशना करो, उनको उस वजह के बारे में पता हो. ठीक है, इसके बाद so I was basically saying कि you guys asked me कि इतना मुश्किल टाइम होता है, तो how to essentially deal with it. तो यार इसके लिए मैं basically ये कहूँगा कि like अच्छा, I'll speak more about the students currently on gap year. अच्छा, so for the gap year students now, I'll just say a few things. पहली चीज़ तो ये कि AKU asks you, जब आप अपना टेस्ट क्लियर कर लेते हो ना, आपको stage 2 फॉर्म आता है. Stage 2 फॉर्म में आपसे सारे एक्स्ट्रा co-curriculars के बारे में पूछते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में पूछते हैं, हॉबीज के बारे में पूछते हैं. उसमें they also have like an additional page over जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ होता है if you've taken a gap year. ठीक है, तो specify करो कि in 100 words I believe why. ठीक है, and then they also ask you about that in the interview. ठीक है,
तो उसके अंदर इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आपने बताना है भी मैंने क्यों लिया गैप ईयर। एंड अगेन डोंट लाई, ठीक है, अपने किसी भी चीज में लाइक झूठ ना बोलना, बिकॉज द इंटरव्यू इज रियली डिफिकल्ट। वो आपको बकायदा इतनी जगहों से आपको अटैक करने की कोशिश करेंगे, इट्स अ प्रॉपर साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, ठीक है। तो आप झूठ बोल रहे हो कि उन्होंने 2 मिनट में देख लेना है, बिकॉज जो इंटरव्यूज होते हैं बेसिकली द स्टाफ एंड फैकल्टी एट AKU, दीज आर डॉक्टर्स जिन्होंने AKU से पढ़ के US मोस्टली like I'll just tell you about my interview, वो बंदा प्रिंसटन से अपनी स्पेशलाइजेशन करके वापस आया था, he was a cardiologist, ठीक है, and he was insanely smart। तो अगर मैं कोई झूठ बोलता है ना, he would have seen through it। तो बस जस्ट टेल देम कि मैंने इसलिए गैप ईयर लिया है। एंड ऑल्सो लाइक ये नहीं कहना मैंने बस गैप ईयर में पढ़ाई की है, जस्ट टेल देम कि आपने गैप ईयर को प्रोडक्टिव कैसे बनाया, ठीक है। व्हाट वर द थिंग्स दैट यू डिड दैट एसेंशियली मेड योर गैप ईयर वर्थ इट, ठीक है। सो यू कैन से कि मैंने कोई नई स्पोर्ट्स सीखी है, मैंने कोई नई हॉबी सीखी है, लिटरली एनीथिंग, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, सो Ira asked us about the negative marking in the test। अच्छा, so basically यार there's a way around the negative marking, ठीक है, like you need to have a strategy for that। और वो like just like I mentioned initially, ठीक है, कि वो उसके लिए we'll be making a YouTube video, ठीक है, and inshallah like we will upload that like a month before the AKU test। तो आप लोग उसको जाके देख लो, we will share the link in the WhatsApp group, ठीक है, because वो काफी लंबा एक पूरा एक तरीका है, ठीक है, and I need like a whiteboard to explain that, ठीक है। So after that I'll just take one last question and then move on। So basically okay, so there's a question about the internships, ठीक है, कि online हो सकती हैं नहीं हो सकती। Yeah, the thing is that I would suggest this case. So this is something that one of my seniors told me when I was in grade 9, and I used to be one of those kids like मैंने अपने सीनियर को जाके कहा था कि मैंने तो 25 इंटर्नशिप्स करनी है, मैंने 25 इंटर्नशिप्स करनी है, मैं तो हर साल पता नहीं 5 इंटर्नशिप्स करूंगा, ठीक है। एंड माय सीनियर वाज लाइक तुम्हारा दिमाग खराब है, यूनिवर्सिटीज डू नॉट वांट अ पर्सन दैट्स जस्ट ओवर सैचुरेटेड, ठीक है, पर्सन हु इज एसेंशियली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किंग ऑफ नन, कि वो हर चीज कर लेता है लेकिन किसी चीज में अच्छे तरीके से नहीं है। सो बी कंसंट्रेटेड, ठीक है, बिकॉज जब आप 25 इंटर्नशिप्स करो, 25 सर्टिफिकेट्स उनको भेज रहे हो, उन्होंने कहना है यार इस बंदे को तो एक जगह से निकालते हैं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, दूसरी जगह से निकालते हैं तीसरी जगह पे पहुंच जाता है। सो एसेंशियली व्हाट यू नीड टू डू इज, अब आई जस्ट टेल यू, मैं अपनी थोड़ा डिस्क्लोज कर देता हूँ। So I basically worked in this one NGO for the last 4 years. When I started, I was just a part of the volunteer team, and by the time I was in my A2, I was essentially in the executive council of that NGO. ठीक है, तो मैंने 4 साल उसमें काम किया, मैंने उन्हें दिखाया कि over these 4 years मैंने काम किया क्या है। Similarly, I was into science Olympiads and STEM. तो when I joined अपने स्कूल की STEM society, so I was essentially a part, I was essentially I was a member, ठीक है, कि मैं बस एक छोटा सा मेंबर होता था, मेरे से फोटोकॉपी वगैरह करवाते थे, ऐसे काम करवाते थे। And by the time I basically graduated, I was I was a part of the executive council, and I had attended events abroad as well, ठीक है, मैंने science competitions abroad भी attend किए थे। So I showed this to them, मैंने उन्हें दिखाया कि मैंने जो extra co-curriculars इतने ज्यादा नहीं किए, I had a total of 4 extra co-curriculars, लेकिन मैंने उनको बहुत in depth किया था, like I basically did everything that I could in those। इसके अलावा so someone asked like English का, yeah देखो you might have noticed how all of us are speaking, कि हम लोग ज्यादातर इंग्लिश बोल रहे होते हैं लेकिन बीच में हम लोग शिफ्ट भी कर जाते हैं, ठीक है, लाइक इंग्लिश उर्दू का मिक्सचर होता है, तो दैट्स ओके, लाइक दैट्स परफेक्टली फाइन। हाँ, लाइक जस्ट ट्राई थोड़ा सा कि लाइक ज्यादा उर्दू ना करो, बट अगेन इट डजंट रियली मैटर, ठीक है, like it's just this is like just my own personal opinion, like I personally think because the interview is really formal, तो मुझे ये लगता है कि और because interview थोड़े बूढ़े लोग ले रहे होते हैं, they're a bit aged, तो उनके दिमाग में थोड़ी सी perception होती है कि English is a formal language, Urdu is an informal language, हल्का सा होता है, it's not like बाकी पाकिस्तान में होता है। लेकिन I would suggest to speak like English बोलना शुरू करो, कहीं पे फंसो उर्दू में शिफ्ट कर लो, ठीक है, और फिर जब जरा सही हो जाए फिर इंग्लिश में शिफ्ट कर लो, just like that, just like इतना मसला नहीं होता है। अभी ना again just focus on the test यार, on enough questions. Okay, so that's it, I think. I don't think we are going to add something more. If there's anyone who wants to add any advice, you can. I think we'll just wrap it up now because it's been long. And I know we have saturated all of you with a lot of information, but take it slow, plan, schedule, see what are your weaknesses, what are your strengths, and then like plan accordingly. It would be fine. And then we have made a WhatsApp group as well. You can always ask questions there. You might not respond for it because obviously we have a lot going on in our own lives, but we'll make sure to respond to you.
Apart from that, you can like scan this QR code on your phones, and this has the drive link for all the resources that we mentioned. It has the PDF books, it has some past papers, it has a syllabus of AKU. So yeah, you can do that. So Fatma is the question. Yes, okay, you can like speak and then like I'll respond, but I'm just gonna take a few questions, and we're gonna end around 10:30. Okay, hi guys. I don't have a question. I just wanted to say something. It's that I don't know because for me it's very hard. I just wanted to appreciate you guys that you guys are doing amazing. This kind of help is literally people like you are very like less in this world and we need more people like you in this world. Trust me. What you're doing is the biggest Sidqa Jariya anyone could have ever done. And this is the greatest help for people who are in Pakistan, who are outside Pakistan, and thank you so much for that. So I really, all of you who have been speaking for so long, I really wanted to appreciate you for this. So good luck for life, honestly, guys. You deserve the world. So we this is we have a code for you actually. You can like access the premium PreMed.PK premium plan by using this code, and this will be only valid till tomorrow. So you can like save this code with you and use it till tomorrow, and you'll have the PreMed.PK subscription that you will be able to use till the end of your MD-CAT. And believe me, I only use PreMed.PK and I loved it. It helped me reach where I am today, and I'm sure Dawar, Balaj, On, Barish, all of them also used it. So yes, this is a little surprise for all of you who stick till the end. So yes, I'm gonna give you a couple of minutes to note this down. After that, we're just gonna end the meeting. Just send your questions on the group. We're gonna take it there. All right. कि सिर्फ पढ़ाई में अपने आप को मार मत देना, ठीक है? आई नो यू हैव टू स्टडी बट यू हैव टू चिल एज वेल, ठीक है? बर्नआउट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ते रहोगे, पूरे 24 घंटे पढ़ोगे, बर्नआउट हो जाएगा, इन दी एंड कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। प्लीज प्लान इट आउट, लेकिन साथ साथ तफियाँ भी करो, ठीक है? गो आउट विद फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, डू नॉट किल योरसेल्फ ओवर स्टडीइंग फॉर AKU टेस्ट एंड MD कार्ड, ठीक है? बैलेंस आउट योर लाइफ, ठीक है? प्लीज प्लान इट आउट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ाई में लग जाते हैं एंड देन की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी स्मार्टली, स्टडी हार्ड ऑब्वियसली, बट चिल एज वेल। So Allah Hafiz. I hope this was helpful to all of you. I'm gonna end the session, and I hope you've noted this code down. Thank you for coming here, and whatever questions you have, make sure in the group will make on to you. And one thing, don't focus on the FA and like the scholarship stuff for now. Just focus on the next step, which is the AKU test, and for the A1 students, which is the extracurriculars, and you'll be good to go. So Allah Hafiz. Have a great night. Take care. Remember all of us in your duas. That's it. Allah Hafiz.